Yeah. तेरा We commencing 13. Chair number 5, T. Jay Shukla, Swati Asim George, Lordship, negative ना हो वो थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश में सबसे कई सारे सेकंड प्राइज है yes objection filed no, Lordship, seeking time to file objection. not filed Lordship, July 22 Your Lordship. application first or repeat Repeat, Your Lordship. then you must have filed the objection earlier. We never even look at your objection Your Lordship. while deciding IA. You must have noticed. Your Lordship. It is only those antecedents that we have told you which Your was Lordship. not there earlier in objection. Your Lordship. But that can also be seen from the record. Your Lordship. A week's time I will grant, Your Lordship. File it. We have passed over one such matter. Your Lordship. We'll pass it over. Let them come. This is 3.2. 2.2 is becoming these two. Then code also becoming to chair number 6, T. Mayank Sharma, then code also becoming to Yes, objection is there. objection है yes objection Fine. Yes, Mr. chair number जनवरी 6, का हम लोग बाद 2022 का है आप Yes, Mr. Dutt, what do you have to say? Well, they say the objection has been filed. थर्ड वेल एप्लीकेशन है फर्स्ट मेरिट पर डिसमिस अरे तो क्या हो गया फर्स्ट मैरिज में तो नहीं अब इनका ये 8 December 22 का है application. this was yes 8th December my lords. Objection is filed. I think they have filed through email my lords. और दिसंबर इसमें जनवरी का हम लोग ऑब्जेक्शन रखा हुआ ऑब्जेक्शन फाइल आपका रखा है You have a copy of that. You want to have or you don't want to have? they can give दे देते हम No, लोग whether you want or not. They can, definitely they can. they may supply us my lords. The objection to IA 23561 of 22 has been सब में filed नहीं आई online. है सब में आई नहीं है Let a copy of the, let a hard copy of the same be supplied to the council for the applicant list after 2 weeks. मानो नाम बताएं अपना, जितेंद्र श्रीवास्तव चैनल है। chair number 7, श्री विनोद कुमार ऋषि, Yes. Objection filed. in this case madam seeking time One time. yes 2 weeks, last opportunity. मानो You file objection. but 8 also I'm seeking 7 में order होगा 5.1 chair number 8, T. सिद्धार्थ दत्त, in the 8 number I'm also seeking time Hmm? 8 maybe I'm praying for time for objection Time. yes This IA is of 22, 10 11 20 10, 11. मानो We can hear it if you want. It's a repeat of first. it's a repeat third wheel If you want, we can hear it. I'm not ready on that. Last opportunity. 2 weeks. chair number 9.1, P. H. Chauhan,
मतलब इसमें लास्ट डेट में वेरिफिकेशन रिपोर्ट कॉल की थी मलॉट ने, वो अवेटेड है मतलब इसमें भी। वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्टर मतलब डॉक्टर डॉक्यूमेंट मतलब इसमें एक 6 साल की बच्ची की गर्दन का ऑपरेशन होना है, उसके मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो टेम्परेरी बेल के लिए प्रेयर थे मिलो। तो रिपोर्ट आई है आपकी? मतलब रिपोर्ट अभी अवेटेड है मतलब। रिपोर्ट देने तो कब कहा था भाई? मतलब ये रिपोर्ट का आदेश मिलोट ये मतलब है 9/11/2022 का है मतलब। 9/11/2022? यस कब देंगे रिपोर्ट आप? मतलब ये इसमें पास इट ओवर कर दे मतलब, मैं अभी फोन बुलवा लेता हूँ उनसे अगर आ जाएंगे तो मतलब। It is unfortunate to note that despite this court having requisitioned the health status report of the child of, how old is the child? 6 year old. 6-year-old child of the appellant, Yes मिलोट, sole appellant, yes मिलोट, 16 sole appellant, by order dated 9/11/22। 9/11. 9/12 11 मतलब 12 होगा 9/12 9/12/22 9/12. यस मिलोट। 9/12/22. The state has not yet submitted the report. As a matter of last indulgence, मालूम this took 7 place days in the next week ओके for the state to submit report, health status report of the son of Child. the appellant, failing which coercive steps shall be taken against the मालूम functionaries of the state. Next week. मिलोट। 9.1 केस नंबर 10 सी संदीप कुमार मिश्रा। जैसे में लगा Lordship. Yes. Your Lordship, this is second bail application in under this case objection has not been filed। That was filed in August. ये आइए अगस्त मतलब यस मतलब दिस सेकंड आई है, फर्स्ट आई है ऑब्जेक्शन मतलब इन दिस 4/10/2021 का रखा हुआ है। पहले का ऑब्जेक्शन होगा आपका? पहले इसका है मतलब failed. पहले आई है, सेकंड आई है, फर्स्ट ऑन मेरिट पे डिसमिस। हाँ, पहले का ऑब्जेक्शन है आपका। You can rely on that. मतलब Yes. बताइए। Your Lordship, at that time, Lordship, custody periods were not enough, Lordship. That's why it was dismissed, Lordship. Custody period is कम over. कम था Lordship उस समय custody period, अभी कितना है? Lordship. अब तो Lordship इसका 2.5 साल से ऊपर हो गया है। 2.5 years. जी पहले रिजेक्ट कब हुई आपकी? ये रिजेक्ट हुई है मतलब 26/2/2022 26/2। ये आपका मेरिट पे डिसाइड हो गया आपका? 22/2 26/2/22। Lordship, Now what is the new circumstance? Lordship उसमें नीचे लिखा है Lordship, लास्ट लाइन देखना Lordship, ऑर्डर की जो रिजेक्ट हुआ है। हाँ, कौन से ऑर्डर की? यही जो मेरिट पे रिजेक्ट हुआ Lordship 26 लोग। हाँ, उसको पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। ऑलरेडी Without commenting on merits of the case, we are not inclined to release the appellant on bail. That is all. लॉर्डशिप उस मेरा ये कहना है लॉर्डशिप कि एट दैट टाइम द कस्टडी पीरियड वाज नॉट इनफ एंड नाउ द लॉर्डशिप कस्टडी पीरियड इनफ एंड लॉर्डशिप इन We're द not स्टेटमेंट looking to the fact that merits have been considered. It's not a, तो आपने केरोसिन डाल के जला दिया अपनी वाइफ को। लॉर्डशिप उसमें उसमें लॉर्डशिप ड्यूरिंग ट्रायल Blind एप्लीकेंट declaration है कोई? फॉरन Blind declaration is there. प्राइवेट ड्यूरिंग ट्रायल Then you लॉर्डशिप please wait.
Please wait, have patience. क्या करना चाहेंगे आइएगा. लॉर्डशिप इनको रिप्लाई के लिए टाइम दे दें, तब तक मैं कुछ और डॉक्यूमेंट. We don't want the reply. इनको बहुत टाइम दे चुके हैं. स्टेट फाइल नहीं कर रही है रिप्लाई. We are. लॉर्डशिप The right to file reply stands closed. उसी को रिलाई कर लीजिए. लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप जो डीडी है, इसका डीडी देख लें. ड्यूरिंग ट्रायल एप्लीकेंट वाज ऑन बेल लॉर्डशिप. This has been considered on 26/2/22. पति ने ही आग बुझाई है लॉर्डशिप. उसने उसमें अपने डीडी में कहा है हमारे खुद के भी हाथ जले हैं. और लॉर्डशिप इसके पिता का जो पिता है PW1, उसको थोड़ा लॉर्डशिप कंसीडर कर लें. PW1 नहीं, वो सब कंसिडर हो चुका है. क्रॉस में. We are not going to review that order. आपको रुकना पड़ेगा. लॉर्डशिप आई वुड लाइक टू विड्रॉ विद लिबर्टी. Counsel to the appellant raised the withdrawal of IS also. I repeat, application for suspension of sentence, which accordingly stands dismissed and withdrawn. पास ओवर मैटर. केस नंबर 1 श्री सिद्धार्थ दत्त. Yes. Second bail. My lord, this has to be argued by the senior counsel, my lord. He is arguing before another bench. This is second bail. Yes, my lord. Should we wait? I'll just ask. There is an argument It's a going. special bench. Why not? And we'll post it after 4 weeks. All. When the case is taken up in the second round, prayer for another passover is sought, which after due consideration is declined. Next prayer. Let the case be taken up after 4 weeks for the same purpose. Right. My lord, my case was at item number 2, my lord. Yes. Possibly the government advocate has sought time to No, file a reply. 2.3. Yes, my lord. That is passed over. केस नंबर 2.3 श्री रंजन बनर्जी. Yes. My lord, I had applied for bail for Bitwa, my lord. Yes. Mitwa Yadav. All right. And this is the first bail application. This is your first attempt. First. Your custody period? And there are 9 persons who has been convicted in this case, my lord. No, the custody period. My lord, I am in custody. I'm sorry, my lord. This is the third application. Third application. What happened to the earlier ones? They were withdrawn, my lord. By which order? They were just withdrawn. 24. 24/11 में तो ग्रांट मिल गई किसी को. Appellant number 2 को शिवराम.
13/4/22. Okay, we can believe. 13/4 to the next one. So this is for temporary bill. Withdrawn. All right, so we have not yet heard it on merits. Yes, my lord. Yes, please. Yes. What is the custody period? My lord, after his conviction, he is on jail, but before the in the trial stage, he was on bail. How much is the custody period? My lord, exact custody period, You are not aware. that is the judgment is dictated, my lord. (21/2/20), and thereafter he is in jail, and during the pendency of trial, क्या इसका नाम क्या है? Betwa. In the judgment, his number 2, my lord. And his father, who is at item number 6, Shivram, he was also convicted, but he has been enlarged on bail by this honorable court. And both the parties, they are related to each other, they are cousins. And all the appellant who has been convicted, they are also cousins, my lord. And it is an admitted fact, there was some dispute regarding agricultural field, and regarding elections also, they contested against each other. Two and a half years. Yes, sir. About 2.5 years. Yes. And no specific assault has been attributed to him. Please read the prosecution story. My lord, the prosecution case is at paragraph 2, my lord. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 26/3/13 की रात को करीबन 9 बजे फरियादी राम कुमार उसके घर जा रहा था कि उसके घर के सामने उसका भाई रामदेव यादव PW8 भैया और रामकिशोर की मारपीट, बड़े यादव जो हाथ में कुल्हाड़ी लिया था, धनीराम यादव, आशाराम यादव, नथु यादव, शिवराम यादव, रिलीज ऑन बेल, सीता यादव, पूरन यादव, बिटवा यादव, लाठी डंडा तथा सांख से मारपीट उसके भाई रामदेव भैया की कर रहे थे। बड़े ने कुल्हाड़ी रामदेव के सर पे मारी थी, जिससे खून निकलने लगा था। दूसरी लाठी धनीराम ने मारी, जो रामदेव के सर में लगी, तो बिटवा ने लाठी मारी, जो रामदेव को लगी। भैया और रामकिशोर को बैल बड़े ने लाठी मारी, जो सिर में लगी। पूरन तथा नथु ने भी मारपीट की। फरियादी राम कुमार के द्वारा भी बचाव किया गया, तो उसे आशाराम ने उसकी एक लाठी मारी, जो बाएं हाथ में भुजा में लगी। फरियादी के चिल्लाने पर बाबू यादव, सूरज यादव ने भी बचाव किया तथा सभी लोग एक राय होकर गालियां देते हुए ये कहते चले गए कि साले आज तो बच गया है, आज दोबारा मिलेंगे तो जान से मार देंगे। फरियादी के भाई की मारपीट संतोष द्वारा रामदेव के खेत से चने बांध कर ले गया था। इसी बुराई पर से उसके भाइयों से मारपीट की गई थी। इसकी रिपोर्ट फरियादी राम कुमार द्वारा थाना चंदला में लिखाई गई थी, जिस पर से थाना चंदला में द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक फलाना पंजीबद्ध किया गया था। आहत रामदेव व भैया रामकिशोर को घायल अवस्था में डॉक्टरी मुआवजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर कराया गया था, जहां से आहतगण के जिला चिकित्सालय छतरपुर में रेफर कर दिया गया था। वहां से ग्वालियर चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया था। Now, your lordship may kindly see the medical evidence. There are only 3 injuries on the deceased, and one is fatal, that is on the head. And
he has been initially examined by. Your assault is with a lathi. That is the prosecution case, my lord. But if your lordship may kindly see the evidence, none of the witnesses has specifically attributed that I have assaulted with a lathi. The witnesses says 3 persons out of the 9 who has been convicted had assaulted. Specific assault by witness regarding 3 persons. And the deceased, he has received 3 injuries. Who are the eyewitnesses? My lord, the eyewitness in this case is Ram Kumar Yadav, PW1. He is an injured witness. Thereafter, Injured eyewitness कौन है? PW1, PW8. They are the injured persons, my lord. And the death is because of? Beg your pardon? The cause of death is? Injury on the head, excess. Which kind of injury? My lord, that is in the post-mortem report, your lordship can you see. Yes, he is PW17. Dr. Hira Raj Manji. मृत्यु पूर्व चोट क्रमांक 1 टाका लगा हुआ घाव जिसपे सिर में दाहिनी आंख से 8 सेंटीमीटर ऊपर था, जिसे 4 टाके लगे थे। टाके काटने पर घाव के नीचे चमड़ी में खून जमा हुआ था। सिर की हड्डी का एक फ्रैक्चर थी जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। दिस इज द फैटल इंजरी। एंड देयर आफ्टर चोट क्रमांक 7 एक निर्धु की चोट दाहिनी भुजा की हरा रंग का था। एक काले रंग का रगड़ स्क्रैच, काले रंग की रगड़, एक निर्धु को चोट बाई हड्डी के ऊपरी हिस्से में था। And in paragraph 6 he says, his opinion is in paragraph 4, मेरी राय में मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट के परिणाम स्वरूप हृदय एवं श्वान तंत्र के फेल होने से हुई थी। मृत्यु की अवधि मेरे परीक्षण के करने के पूर्व 6 से 24 घंटे के दौरान हुई थी। Thereafter in paragraph 6 यह सही है कि सामान्यतः हृदय गति रुकने से के कारण ही हो सकता है। रक्त कहाँ से प्रकरण में से सिर में लगी चोटें का कारण हृदय गति रुकी है। मैंने शव परीक्षण करते समय मृतक के शव की ओर भी जांच की। ये कहना सही है कि चोट क्रमांक 1 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। So one injury is fatal, other are bruises on the deceased. 9 persons has been convicted, and they say the omnibus statement सब मार रहे थे। If सब मार रहे थे, there ought to have been multiple injuries, my lord. That is not there. So there are about 6 injuries. तो scratches रगड़ा खाया, जमीन में गिर गया होगा। And on the head there are? 1 single. There is 1 injury. 1 injury. What kind of injury? That was a fracture and excessive loss. So was it an incised wound or a laceration? But not according to the witnesses, lathi mari. Lathi. So lathi means that is attributed to Bade Bell. Dhaniram. I'll point out the evidence, my lord, on that aspect. That is, if lordship may kindly see. The only thing is that you actively participated. You also assaulted the deceased. My lord, this is the allegation, but no witness says that my active participation. My house is there, so my presence ought to be there. No, it is natural, my presence. Eyewitnesses don't say so. They don't say that I have specifically assaulted. Sab maar rahe the. But they have mentioned 3 persons specifically, in ye mara, in ye mara, in ye mara. All right, so let us hear the other side. Yes, sir. Yeah. Lordship, the wound may kindly be seen at paragraph PW1, dekh le, my lord. PW1. So let them make their submissions. Your Lordship, the
The injury is at paragraph 17 of paragraph 12 of the judgment, which is the statement of PW 17, the doctor which has done the postmortem. Uh, एक टाका लगा हुआ घाव सिर के दाहिनी, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दाहिनी तरफ दाहिनी आंख से 8 सेंटीमीटर ऊपर था, जिसमें 4 टाके लगे हुए थे। टाके काटने पर घाव के नीचे चमड़ी में खून जमा हुआ था और सिर की हड्डी में क्रैक फ्रैक्चर था, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। एक नीलगू की चोट दाहिनी भुजा के आगे पर, जिसका रंग हरा नीला था और आकार 4x4 सेंटीमीटर था। एक काले रंग का रगड़ का चोट दाहिने घुटने पर, एक रगड़ का चोट बाहिने कोहनी पर, एक नीलगू चोट दाहिनी हड्डी के ऊपरी भाग पर। एंड द कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू द हेड इंजरी। पैराग्राफ 44 में काइंडली भी सीन। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण कुल्हाड़ी, लाठियों जैसे घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कर रहे थे। सभी आरोपी गण का मारपीट में सक्रिय भूमिका निभाना भी यह दर्शित करता है कि वह अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य को जानते थे और उनके अग्रसरण में वह घटना स्थल पर गए थे और अपराध में उनके द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि आरोपी गण का कोई सामान्य उद्देश्य घटना कारित करने का नहीं था। They were all having a common objective, Your Lordship. Then the statement of PW1 is evaluated paragraph 23, Your Lordship. The evidence, I have the copy of evidence, I have just pointed out, Your Lordship. Where the involvement of Bitwa is being stated by the injured witness, Your Lordship, and the wife of the deceased as well, Your Lordship. झगड़ा हुआ क्यों? Your Lordship. Why did this argument and altercation happen? My lord, there was previous strained relationship, my lord. Huh? If Your Lordship may kindly see why this happened, they say that there was previous strained relationship. And the son of Sita, convicted accused, he went to the field of the witnesses and picked up some chana. And for that, the argument started. Your Lordship, para 32 for that matter may be seen, Your Lordship. चना उखाड़ने गया था, चना उखाड़ा, and from there the argument started. जमीन को लेके पुराना. Son of convicted accused Sita. PW6 is an eyewitness, Your Lordship. नहीं, eyewitness तो कई है. नहीं, उसने बताया है कि जमीन के विवाद को लेकर. So, Mr. Banerjee, we are not inclined. For the time being, we are not. My lord, I just you can wait for some more time and apply again. My lord, I'll just pray that if Your Lordship may kindly see the evidence, my lord. So, we have seen that. We have seen the witness. We've seen the evidence. My lord, in the judgment, the role But of the every fact person. says that you actively participated. It's not that you were a bystander. No, my lord, Your Lordship may kindly see. It has to be inferred from the evidence as to what role I have played. Now, in the judgment, it is perverse. Therefore, we have challenged the judgment. In the judgment, everything is against me, my lord. Therefore, we have challenged this. Now, the evidence, if Your Lordship will kindly see, my presence there is natural because my house is there, 2 steps away from that spot where the incident had taken place. My house is there. Myself and my father both were standing there. But And we have been wrote in, my lord. But Mr. Banerjee, we are not inclined for the time being. So, I'll withdraw. Honored Counsel, after arguing for a while, pays the withdrawal of IAS also. I repeat, application for suspension of sentence, which accordingly stands dismissed and withdrawn. Number 5, T. Jai Shukla.
CL number 5, C. Jay Shukla. Your objection is there? Yes. Lordship, objection, I'm seeking time, Lordship. Not there. Not there. Well, July application. Your Lordship. First or repeat? It's a repeat bill application. Then you must have filed it earlier. You can adopt that. Why to file objection every time? Look here, no one appears. No one appears in the second round. No one had appeared in the first round, no one appears in the second round. To press IA 13411023. Next, accordingly, they said IAS so and so stands dismissed for want of prosecution. This for final hearing. CL number 1, C. Amit Kumar Sthapak. Mohan Tosarkar. Wait for 2 weeks time for filing the agenda. Filing? Same for 2 weeks time for filing the agenda. We joined up.
The only prayer sought is direction to decide the representation. That is the only That is the only prayer. Why should we keep it pending? My lord, And what are these representations? my lord, may I make a request? We have filed the reply to the petition, my lord. These representations are pending or decided? No, that is pending, my lord. They are pending. All are pending, my But lord. they are praying for what? Now they are only seeking your lordship to decide the representation which has been pending before the What is cantonment. prayed in the representation? Yes, my lord. What is the request in the The, representation? the request is that for granting of family pension. She is seeking We'll the say family that- pension We'll say that they'll decide as per law. as per the circulars of the government of India Whatever. TOPT. my lord. Yes, yes. This petition, the learned counsel Shri अमित स्थापक Amit, स्थापक आपका power है? यस Prays for time to file rejoinder. Next, brother. Looking to the limited prayer made in this petition, which is merely for a direction to decide the representation, the aforesaid prayer is declined. And the case is heard and decided finally in the following terms. Next para. The limited prayer made in this petition is to the following extent. Quote. Next para. The grievance of the petitioner is about non-grant or Only one ground is there, my lord, for granting of family pension. of non-grant या family pension quantum कम मिला है. नहीं, we are not granted. अच्छा, non-grant of the family pension to the petitioner who is the widow of deceased, My lord, his daughter. daughter of Yes. the deceased. No, disease nahi, sir. She is claiming the Sorry. family pension from her father. Her husband has been died in the year 1995, but later on she is seeking your lordship family pension of her father. Petitioner who is the daughter of late Sri Pratap Kumar. Dhannulal. Huh? धन्नूलाल अच्छा, Father's name Dhannulal. father Dhannulal. No. Page number 19 may kindly have a look for a moment. The representation is there. Who died on 4/8/2002 after allegedly working with the respondents from 25/5/44 44 to 30th June 85. Next. Without commenting upon merits of the case, since the claim is yet to be decided by the competent administrative authority, this court disposes of the present petition in the following terms. Number one, the sole respondent, is directed to decide the representations dated so and so, so and so, so and so, contained in P4. My lord. P4. As expeditiously as possible, preferably within a period of 2 months, from the date of receipt of copy of this order. Number two, in case the said representations are not available in the records of the competent authority, then the petitioner is at liberty to file a copy of these representations or file a fresh representation to the respondents, which if done within a period of 1 month shall be considered and decided on its own merits. We have filed the reply, my In lord. accordance with law, without being influenced by the petitioner having approached this court. Number three, it is made clear that the petition, this court has not expressed any opinion on the claim or merits of the claim of the petitioner. The competent authority is directed to decide the claim. According to the, my lord, the circular which has been issued by this central government. Accordance with law includes everything. My lord, oblique circulars that can be. No. Because the circulars has been floated by the Ministry of Personal Affairs. Accordance with law as well as the relevant executive instructions.
as expeditiously as possible. Madam, I am for the cantonment Jabalpur, madam. Yes, sir. So So, great. Bill number 2 with connected matters, Sri Surya Pratap Singh Rai, Harshit Patel. Lordship, in this matter, council engaged has been elevated. I am praying for 2 weeks' time to seek instructions and file new power. you are Sanjay Rusi. Sanjay Rusya submits that, seeks and is granted, how much time? 2 weeks' time, Lordship. To seek instructions and file power of attorney on behalf of the petitioners. Any week commencing may be given, man. It's an old matter. Any interim order? Yes, there is an interim We order. have deposited the amount directed. There is an by- interim order, but not any week commencing may be given. Yeah, So- what is challenge? What is challenge? What is the 7A order? The principal amount has been. What is an A order? Along with that, not they. What about appeal? No, they did not go for appeal. They only say, my lord, that the difference of amount, they have deposited the amount, but they say that some amount has to be deposited by the state government. The state government, my lord, one go they give the grant. There is no bifurcation of any PF amount, my lord, under that grant amount. So they say that since they have not received the grant amount from the state government, so that difference may be taken from the state government. So it is, there is no master servant relation between the state and the granted aid schools, my lord. Because the state grants the gives the grants, my lord, it does not bifurcate, my lord, any amount under provident fund. So it has to be deposited by the management itself. Now, along with this petition, my lord, they have also brought on record an order under section 14B, which is not maintainable under this petition because both are separate proceedings. So it may be commencing, any week commencing may be given. So why did they not go in appeal to the tribunal? Now it is too late, my lord, but 2003 matter. Only question is, my lord, whether the state has any authority to give, my lord, the provident fund amount under separate head. They are not questioning that they have not received the grant. They only say under the provident fund account they have not received a certain sum of amount, my lord. Therefore, they have deposited less amount. So they are not challenging the applicability. They only say that the state government has to give that fund. You have taken action on the 7B also. No, 7B, they have filed a review. We rejected the review. So they have challenged both the orders under 7A, 7B. Now subsequently they have brought an application for appropriate direction on record and they questioned the 14B proceedings, which is not maintainable under 7A. It has to go separately, my lord. That is a consequential order followed by an order under 7A. So both the petitions are connected. These are all. Presently, who is prosecuting the petition? Pardon? Power of attorney तो किसी का होगा ना? Pardon? आई का तो बेकार. पावर ऑफ अटॉर्नी का है. पिटिशन के बाद हुआ ना. 3 मैटर लाया नहीं. 3 मैटर. नाइट पिटिशन लाया नहीं है शायद. पावर ऑफ अटॉर्नी हटा देते हैं. There is some decision on this point already. My lord, it is settled law that the state government, my lord, gives a grant to the schools. It does not bifurcate the grant in any heads, my lord. That is a one-go grant, my lord.
And according to that ground, my lord, the management is supposed to give the salary, disburse the salary, the other expenses, and my lord, it includes the provident fund also. So they cannot say that, my lord, that under provident fund, the state grants a separate amount, my lord. That is what we say. Once they have complied, they are not questioning the applicability. The applicability is still there, my lord, that the all these schools in the state of Madhya Pradesh are covered under the act. Now the only question is, once the school grant receives a grant, they cannot say, my lord, that the grant has not, the provident fund is not included. They have paid the provident fund. They only say that some amount of provident fund, that is pension amount, that 8.33, which goes from the employer's head to the pension fund, that has not been granted by the state government. So it is not the case. All these schools in the state of Madhya Pradesh, they receive the grant, and my lord, 12% from the employee share is deducted, and 12% from the employer share is deducted, and out of 12%, 12% of the employer share, 8.33 is bifurcated into the pension fund, which is the corpus, my lord, generated by the fund of the employer, my lord. And when the employee retires, They have received that 12%. yes, yes. No, it is not the 12%. My lord, the state government gives the grant in one, my lord, one lump sum amount, my lord. It is the school which has to, my lord, exercise all these formalities, my lord. Because once you disperse the salary, my lord, it is automatic that the basic plus DA attracts PF, and then 12% has to be deducted. And when you deduct 12%, the management has to contribute his 12%, my lord, their 12% to the fund, my lord. And that is how the pension fund is generated, my lord. The corpus is from the employee's contribution. State is paying 8% presently. 8% देंगे. अलग से ही देते 8%. Separate देते हैं बस इनका. एक अमाउंट देते हैं. List, next week we'll take it. Next week. Next week I am adjusted lot after that. On 20, week commencing 20th. So there is an interim order working Lordship. against the Provident Fund organization. We have deposited the amount directed. You know the fate of this petition. Lordship. Everybody knows the fate of the petition. Lordship. Has to be, I mean, it has to be dismissed. Any date after 14th, Lordship. Any date after? 14th. Of? This month. Or week commencing 20th. Just in the week commencing 20th February. 20. Obliged. Obliged. Cell number 3, Ms. Sudipta Chaube, Yogesh Mohan Tiwari. I appear for intervener in this case, Your Lordship. The default of PS. Permission to intervene. Permission to intervene in a contempt. Yes, Manoj, in fact, this is not maintainable, my intervention application. Therefore, I have filed a fresh application. This was filed by the previous council. I filed a fresh contempt petition, so this may be listed along with that. This is contempt number 275 of 23. I appear on behalf of the LRs of the petitioner. The order is at page 11. Who is for the petitioner? They are alleging non-compliance of this Of this order. C1. Yes. C1 stands today or not? It stands. Stands. Yes.
Your case has been remitted, that's all. And they were decided. And what is the contempt? Nothing has been done with it in pursuance of this order. And what have they alleged? Why contempt? They were the allotment made to the respondent 6 and 7 shall remain unaffected. And my lord, the direction was case is remitted back to the collector to examine the aforesaid question and to take steps in accordance with law. This was the direction. Now this direction has not been complied with at page 14. Who is the petitioner? Miss Sudipta Chaube, her name is reflecting in the cause. So Kumar Rawat. So my request is that it can be linked with contempt petition number 275 of 23. In that I am the petitioner. You have challenged what? The same order. I am alleging non-compliance of the same order. I was pursuing a wrong remedy of filing an intervention application because this cannot be in support of the petitioner. So I filed a fresh contempt petition. You means who is The LR of Mukesh Rawat. Of Mukesh? Mukesh Rawat. Who is Mukesh? If your Mukesh lordship was not a party in the WP. The cause title, in fact, it is Mukesh Rawat and others versus State of MP. At page 11, if your lordship would see the cause title, Mukesh Rawat and In others. the C1 order, you were not party. In fact, if your lordship would see page 10, Mukesh Rawat, party number A, he is legal representative of Sarla Devi, the original petitioner number 1. So he was impleaded as a party after death of Sarla Devi. And that is why even the cause title also reflects Mukesh Rawat and others versus State of MP. So what is the reply of the? There is no reply. Who are the contemners? Collector Hoshangaban. What was the reply? There's no reply. No reply. No reply. सर्विस हो गई कि नहीं? देखो बहुत सारे How are you related to the petitioners in that MP that was filed? Ashok, Durgesh, Akhilesh. In the original petition, Sarla Devi was one of the petitioners. Now Mukesh Rawat was her son. Now the intervention application is on behalf of the legal representatives of Mukesh Rawat. Even Mukesh Rawat passed away. Mukesh is Sarla's son. Sarla Devi's son. But this had to be decided by the collector. Yes, this was required to be decided. What is collector's reply? No reply has been filed, Your Honor. That is this matter is an old matter. My lord, it's a contempt of the year 2010. In fact, my lord, the incumbent is also, my lord, changed. Well, here this contempt alleges non-compliance and therefore disobedience of the final order 13/4/2002 passed in MP so and so, by which the following directions have been passed. Report filters. There are 5 courts. Next one. This contempt alleges that after the passing of the aforesaid order dated so and so, the collector to whom the matter had been remanded
has taken no steps. Next one. Since this case has come up after a long time, since this case has come up after maybe more than 6 years, the State Council present in the court is directed to seek instruction in the matter. I'm praying a copy may be given to me, my lords. I'll seek instruction. From collector, कहाँ है collector? Narmadapuram. Now Narmada. Narmadapuram. Yes. Copy of this order is served free of cost to the council for the state. Can it be linked with contempt petition number 275 of 23? Always linked with 23. The registry may be directed to 275/23. to reflect my name, my lords. Otherwise, it could not be traced, my lords. The name of Advocate General is reflected in the cause list. Contempt, sir. Because for marked personally, my lord, contempt cases. No, वो तो जब आप पावर पेश करेंगे तब समझ में आएगा किसको एंगेज करेंगे. अभी तो विल से एडवोकेट जनरल. या आपका नाम मेंशन करो. हाँ, ठीक है, विल मेंशन योर नेम. ऋतिक पाल. GL number 4, Sri Gopi Chaurasia, Sanjay Dwivedi. They have filed an application seeking interim relief, my lords. The copy of which has not been served upon me. A case of the year 2011, my lords. The petitioner admittedly is 68 years of age as on date. She is seeking declaration of result. Which examination she was permitted? This is, my lord, the examination to the post of subordinate account service, MP subordinate account service. Meanwhile, she retired. She is retired, my lords, and in fact, my lord, she was not eligible as this exam could be given 6 times or for a duration of 20 years, whichever was earlier. So the first time she had given the exam in the year 1986, and in 2006, 20 years had completed, so she could not give this exam afterwards. By an order of this honorable court, my lords, the interim direction was to allow her to appear. But, my lord, she is seeking declaration of result which cannot be done, my lords, unless the matter is heard finally. What is the fate of that examination? My lord, that is of the year 2012. I'm sorry, my lord, 2011. So after 2006, anyway, she could not have appeared. And because the rules provide for a time limit of 20 years within which the 6 attempts could be taken. There must be some controversy on that issue. My lord, we filed our detailed return, my lord. If they argue, if they are appearing and arguing, then IAS also has been no one for the petitioner. Ritwik Parashar for the state. You are government advocate. My lord. Government advocate for the state. IAS also has been filed seeking interim writ or a direction to declare the result of the petition. The result of the examination. Which examination? 2011. MP Subordinate Accounts Service Exam 2011. So-and-so examination in which the petitioner had appeared pursuant to an interim order passed on 17/10/12. My lord. Next one. It is informed by Sri Parashar that the petitioner has since attained the age of superannuation.
You were the teacher? Maloj, accounts officer. You were the, She was working as Maloj, I would. already attained the age of superannuation, long time back. Next, sir, in view of the above development, it could be. UDC, Maloj. Finally, hear the matter. Huh? UDC City Treasury. Finally, hear the matter. List, final hearing list of March 2023. Flogging a dead horse. Hmm? Flogging a dead horse. You'll have to hear it finally. Maloj. You don't know. ये नंबर 5 श्री सतीश श्रीवास्तव। Yes. This is a case relates to a penalty imposed in a departmental inquiry. And if I can draw the attention of the lordships to What is the penalty? my lords, What is the penalty? penalty is, my lord, that is withholding of, my lord, 2 increments with cumulative effect for 1 year. That is penalty order is annexure P5, my lord, page 23. Page 23, my lords. Yeah. Annexure P5. I lord should find that penalty part is, my lord, on page 24. Yes. Page 24, my lords, last paragraph. Yes. लास्ट 4 लाइन मतलब सी अतः आरोपी का उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है। आरोपी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी श्री जेपी पटेल वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी पुलिस की ITI जहांगीराबाद भोपाल को जारी कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित सजा में कोई कमी नहीं करते हुए उसे 2 वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि 1 वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से कम किए जाने का दंड दिया जाता। दिस वाज द पेनल्टी। नाउ माय लॉर्ड शुड काइंडली सी द चार्ज शीट। The charge sheet is annexure P2, page 48. So all charges approved? No, charge number 1 and 4. In fact, 1 is proved. 2 and 3 are not proved. And the basis of 1, they have said that 4th also stands proved in view of 1. My lords, may have a look on the charges. What are the charges? The charge sheet is annexure P2, page 14. So charges fine mentioned at page 23 itself. Yes, on that page also the charges are reproduced. Penalty order. Yes, it is reproduced. Now, my lord should kindly see the inquiry report. The inquiry report is, my lord, on page P8, my lord, page 35. And if my lord should kindly see page 37. Yeah. Page 37, my lord, he has, the inquiry officer has reproduced the charges. Thereafter, he says, my lords, may please see page 38. Page 38, my lords. Yes. अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श पत्रों की सूची जो प्रदर्शित हुए, the documents which are said to have been exhibited,
That list is from 1 to 8. Thereafter, just after that, my lord, he writes साक्ष्य का आरोपवार विश्लेषण. Now I'll just read from this onward, where he says साक्ष्य का आरोपवार विश्लेषण at the bottom of page 38. आरोपी पर प्रथम आरोप यह है कि पुलिस आईटीआई के प्रभारी अधीक्षक की हैसियत से स्वयं की हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत से नस्ती श्री बीके तिवारी स्थापना लिपिक से अध्ययन हेतु प्राप्त करना तथा उसे वापस नहीं करना. इस आरोप के संबंध में नाउ माय लॉर्ड्स काइंडली नोटिस, इस आरोप के संबंध में कुल 12 अभियोजन साक्ष्यों के कथन लिपिबद्ध हुए तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य पत्र प्रदर्शित कराए गए. मुख्य गवाह श्री बीके तिवारी तत्कालीन स्थापना लिपिक ने पूर्व में दिए गए कथनों के विपरीत विभागीय जांच में कथन दिए हैं कि पुलिस आईटीआई की में पदस्थापना के बाद श्री LKS राठौर से जब चार्ज लिया था तब उसे गृह निर्माण समिति की शिकायत नस्ती उसे चार्ज में नहीं मिली थी, परंतु उसने अपने कथनों में उप पुलिस महानिरीक्षक के पत्र दिनांक 15/5/6 के जवाब में भेजे गए अपने जवाब अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श पत्र क्रमांक 12 दिनांक 2/6/2006 के स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है. इससे स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 ने उक्त स्पष्टीकरण के उत्तर की पुष्टि की. अभियोजन प्रदर्श पत्र 12B के अंतिम पैरा में श्री तिवारी ने लेख किया है कि नस्ती पटेल द्वारा अध्ययन के लिए ली गई थी और पटेल अलमारी में रखे थे. चूंकि पटेल पुलिस आईटीआई भोपाल के प्रभारी थे इसलिए मैं चाहकर भी नस्ती वापस नहीं ले सका. पटेल द्वारा कहा गया था कि मैं प्रभारी हूं, नस्ती का अध्ययन कर रहा हूं, जिसे बाद में वापस कर दूंगा, जिससे श्री JP पटेल द्वारा वापस नहीं किया गया था, जिसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं. उन्हीं के विरुद्ध वह नस्ती थी जिसके लिए श्री पटेल ही दोषी हैं. यद्यपि उक्त अभियोजन साक्षी पक्ष विरोधी में है, किंतु उन्होंने अपने कथन में उक्त अभियोजन प्रदर्श पत्र की पुष्टि की है जिससे आरोपी के विरुद्ध अभियोजित आरोप क्रमांक 1 प्रमाणित पाया जाता है. और व्हाट द इंक्वायरी ऑफिसर सेज that the witnesses which have been examined in the departmental inquiry, they have not supported the case of the department. All of them has not supported the charges leveled against the petitioner, the charge number 1 particularly. But it says that the documents which were collected during the preliminary inquiry, he says that his finding is based on the documents which were collected in the preliminary inquiry. Where is that? It says, my lords, may please see, I'll just read it again. He says, इस आरोप के संबंध में कुल 12 अभियोजन साक्ष्यों के कथन लिपिबद्ध हुए तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श पत्र प्रदर्शित कराए गए. मुख्य गवाह श्री बीके तिवारी तत्कालीन स्थापना लिपिक ने पूर्व में दिए गए कथनों के विपरीत विभागीय जांच में कथन दिए हैं. The witness number 10, who BK Tiwari, on the basis of whose statement the charge sheet was prepared, he says he has not supported the charge, लेकिन ये लिपिक ने पूर्व में दिए गए कथनों के विपरीत जांच में कथन दिए हैं. He did not support his statements are contrary to the charges. कथन दिए हैं कि पुलिस आईटीआई में पदस्थापना के बाद श्री LK राठौर से जब चार्ज लिया था गृह निर्माण समिति की शिकायत नस्ती उसे चार्ज में नहीं मिली थी, परंतु उसने अपने कथनों में उप पुलिस महानिरीक्षक के पत्र दिनांक 15/5/2006 के जवाब में भेजे गए अपने जवाब अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श 12 दिनांक 2/6/2006 में स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है. What it says earlier, the Inspector General of Police had where is the statement? Where is the statement? That statement, previous statements are not here on record. Now the record must be with them because the court had directed them to produce the record. Record is available, Lordship. Like now the question, BK Tiwari का बताइए record statement before the inquiry of BK Tiwari का statement. सर इसमें BK तिवारी का स्टेटमेंट पेज 31 पर अगर आप देखेंगे अनेक्शर P7. Which statement? Statement in the inquiry. Before the inquiry officer. Before the inquiry. Kindly see annexure P7. श्री बीके तिवारी स्वयं ने अपने कथन में बताया कि सन 2003 में आईटीआई में पदस्थ हुआ था. मैंने आईटीआई में स्थापना लिपिक का चार्ज दिनांक 28/10/2003 को LKS राठौर से लिया था. चार्ज लिस्ट की छाया प्रति 1 से लगाकर 8 पन्नों में है. चार्ज लिस्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 के
सरल क्रमांक 4 पर प्रतिनियुक्ति बाबत नस्ती पृष्ठ क्रमांक संख्या 1 से 2202 तक चार्ज लिस्ट के पृष्ठ संख्या है 5 के सरल क्रमांक 57 पर श्री जेपी पटेल की शिकायत नस्ती पृष्ठ संख्या 1 से 46 तक इंद्राज है। मुझे चार्ज लेते समय प्रतिनियुक्ति संबंधी फाइल चार्ज में मिली थी, किंतु श्री जेपी पटेल की शिकायत नस्ती मुझे चार्ज में नहीं मिली थी, नहीं वह फाइल प्रचलन में भी नहीं थी। उच्च निरीक्षण कल्याण लेखा द्वारा पत्र दिनांक 12/5/2006 द्वारा प्रतिनियुक्ति संबंधी नस्ती के बारे में जानकारी चाहिए गई थी, जिसका जवाब मैंने 2/6/2006 द्वारा भेजा था, जो अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श 12 है। उस पर ए से ए भाग तक मेरे हस्ताक्षर, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। मैंने दिनांक 29/1/5 को स्थापना शाखा का चार्ज लिस्ट प्रदर्श P8 के अनुसार श्रीमती लता पवार को दिया था। चार्ज लिस्ट के सरल क्रमांक 3 पर प्रतिनियुक्ति नस्ती संबंधी उल्लेख है। प्रदर्श P8 के सी भाग सी पर मेरे हस्ताक्षर है। यह कथन मेरा है, पढ़ा सही होना पाएगा। So he did not support the charge. He said that I never received that. Earlier in the preliminary inquiry, it was stated that he had made a statement that he had given that file to this petitioner, and the petitioner had not returned that file to him. Now, in the departmental inquiry, he says that he had not received that file. Once he had not received, there was no question of handing over the file. Now, whatever has been stated in the departmental inquiry, my lord, once the witness is examined in the departmental inquiry, that statement only has to be relied upon. They cannot rely on the previous statement. And he is only the witness. The इंक्वायरी ऑफिसर सेज कि इन्होंने यहां तो चार्ज को सपोर्ट नहीं किया, पर पहले इन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, इसलिए उसके आधार पर फाइंडिंग है। That cannot be done. That is unknown to law. And other than that, there was no evidence. If we see the inquiry report, my lords, other than that, there is no other evidence. And this is what my objection is, that the statement made in the preliminary inquiry cannot be relied upon. Well, this man had taken charge prior to or subsequent to Patel? He had taken charge subsequent to Patel. He had taken charge of this as an establishment clerk from LKS Rathore. All right, so this is your main ground. Malum. Now, there is no evidence, Malum. It is a case where there was no evidence. And if we see, not only this, Malum. About the remaining charges? Malum. Then, Malum, may please see charge number 2 and 3 have been found to be not true. Malum, may have a look on this inquiry report. ठीक है, साक्ष्य के अभाव में आरोप क्रमांक 2 अप्रमाणित। जी। Then number 3? Number 3 is also मालूम not, ये नंबर 3 भी पेज 40 पर है। 40 पर देखेंगे मालूम, आरोप क्रमांक 3 भी साक्ष्य के अभाव में पूर्णतः अप्रमाणित पाया जाता है। नाउ चार्ज नंबर 4 में वो कहते हैं आरोपी का चौथा आरोप यह है कि सिविल सेवा आचरण के नियम 12(4)22 के अनुसार अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग करना प्रमाणित पाया जाता है। क्योंकि आरोपी के विरुद्ध आरोप क्रमांक 1 प्रमाणित पाया गया है, अतः यह स्पष्ट है कि आरोपी ने स्वहित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। क्योंकि 1 प्रूव हो गया, इसलिए 4 भी प्रूव मान लिया। अब अगर आप ऑर्डर देखेंगे सर इन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, दैट ऑल्सो मालूम, दैट ऑल्सो डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। मालूम में हैव अ लुक ऑन द ऑर्डर पास बाय द disciplinary authority, that is malord annexure P5. P5 malord should kindly see page 23. Where? Malord, I am reading last paragraph annexure P5 का पेज 23 का। अतः मेरे द्वारा विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन अध्ययन किए जाने के पश्चात विभागीय जांचकर्ता अधिकारी की राय से सहमत होते हुए इस कार्यालय से आरोपी को कारण बताओ नोटिस क्रमांक इतना इतना में 2 वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि 1 वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से कम किए जाने का दंड प्रस्तावित कर नोटिस जारी कर नोटिस दिनांक 7 दिवस में मांगा गया। इस नोटिस का उत्तर आरोपी के द्वारा दिनांक 15/6/10 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो अध्ययन हेतु रखा गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर का मेरे अवलोकन अध्ययन किया गया। अध्ययन पश्चात यह पाया गया कि आरोपी द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए गए।
आरोपी द्वारा यह तर्क दिया गया कि जांचकर्ता अधिकारी ने आरोप क्रमांक 1 को प्रमाणित करने के लिए जो आधार बतलाए वे प्रथमतः अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श 12B को आधार बनाया। यह प्रदर्श पत्र वह है जो प्राथमिक जांच में लिए गए कथन है जो कि आवेदक के पीठ पीछे लिए गए, जिसे विभागीय जांच में शामिल कर आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा प्राथमिक जांच में लिए गए कथनों की पुष्टि अभियोजन साक्षी 12 से विभागीय जांच के दौरान आरोपी के समक्ष में स्पष्ट रूप से कराई गई। इस कारण अब इस पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं। ये भी वही कह रहे हैं सर कि जो है प्रदर्श P12 जो उनका प्रीवियस स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको इन्होंने पुष्टि कर दी, इसलिए जो है अब इसको दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं। ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग दैट द विटनेस हैज नॉट सेड एनीथिंग बट प्रीवियस स्टेटमेंट हैज बीन रिलाइड ऑन, देयरफॉर देयर इज नो रिक्वायरमेंट। आरोपी द्वारा अपने जवाब में आरोप क्रमांक 4 के संबंध में उत्तर दिया है कि आरोप क्रमांक 4 में औचार कदाचार के लांछन में विषय वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल उन नियमों के विवरणों का उल्लेख किया गया है। Have is only consequential. Madam, this is occurs. So, madam, this is the order. बताइए, anything else? Anything else? Madam, the only thing, madam, I just, because this does not, this order, even order passed by the disciplinary authority, it does not, it is not in conformity with the rule 15 of the rules of 1966, madam. Madam, the disciplinary authority is required to record its finding. The disciplinary authority may not record, madam, they may not write a judgment. But he is required to record his finding on the charges on which he finds that the delinquent is not found guilty. So that requirement is not met. Well, that is there in second page. He has given us reason. May not be very elaborate, but he's given the reason. The reasons are, the reasons are that preliminary inquiries statements have been The reason may be wrong, but he has given the reason. Yes. Yes. Any other procedural lapse? No. No, madam. All right. Yes. I'll just supply charge 1 के बारे में बताइए. Lordship, kindly appreciate the findings of the investigation officer. The first time I read the charge, Lordship. आरोप ये था, पुलिस ITI के प्रभारी अधीक्षक की हैसियत से स्वयं की हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत से संबंधी नस्ती श्री BK तिवारी स्थापना लिपिक से अध्ययन हेतु प्राप्त करना तथा उसे वापस नहीं करना। इस आरोप द फाइंडिंग्स लॉर्डशिप, इस आरोप के संबंध में कुल 12 विजुअल साक्ष्य कथन लिपिबद्ध हुए। उनके द्वारा विजुअल साक्ष्य पत्र प्रदर्शित कराए गए। मुख्य गवाह श्री BK तिवारी तत्कालीन स्थापना लिपिक ने पूर्व में दिए कथनों के विपरीत विभागीय जांच में कथन किए हैं। पुलिस ITI पदस्थापना के बाद श्री LKS राठौर से चार्ज लिया गया था, तब उसे गृह निर्माण समिति की शिकायत कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं? Page 39, maybe. It is the report of the inquiry of I'm reading the records, Lordship. It is maybe inquiry officer का page report. 39 maybe inspired. Petition में पेज तो बताइए जहाँ पढ़ रहे हैं. In their petition, Lordship, it is at page number 39. He is reading one of the inquiry officer's report. I'm reading the report, Lordship, the record available to me. Yes, yes. Then पढ़िए. नहीं मिली थी, किंतु उसने अपने कथनों में उप पुलिस महानिरीक्षक नहीं, कहाँ से पढ़ा था आपने? It is the Lordship, page 39. हाँ. The first para. हाँ पढ़िए. फिर से पढ़िए Lordship. इस आरोप के संबंध में आरोप नंबर 1, इस आरोप के संबंध में कुल 12 अभियोजन साक्ष्यों के कथन लिपिबद्ध हुए। उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श पत्र प्रदर्शित कराए गए। मुख्य गवाह श्री BK तिवारी तत्कालीन स्थापना लिपिक ने पूर्व में दिए कथनों के विपरीत विभागीय जांच में कथन किए हैं कि पुलिस ITI में पदस्थापना के बाद श्री विपरीत कथन किए हैं, से क्या मतलब है? पिछले कथन क्या थे और अभी क्या है, ये भी तो बताइए। और ये जांच में कथन किए थे, उसके बाद सब ब्लैंक हो गया है, व्हाइटनर लगा दिया है किसी ने। ये न लॉर्डशिप, पिटीशन में रिकॉर्ड में क्लियर है। पिटीशन ने जो फाइल करी है इसमें जैसे व्हाइटनर लगा। एनीवे पढ़िए। 12 अभियोजन साक्ष्य कथन लिपिबद्ध हुए। उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य प्रदर्शित करा गया। मुख्य गवाह श्री BK तिवारी तत्कालीन स्थापना लिपिक ने पूर्व में दिया कथनों के विपरीत विभागीय जांच में कथन किए हैं। पुलिस ITI पदस्थापना बाद श्री LKS राठौर चार्ज लिया, उसे गृह निर्माण समिति की शिकायत नस्ती को चार्ज में नहीं मिली, परंतु उसने अपने कथनों में पुलिस महानिरीक्षक के पत्र दिनांक 15/5/6 के जवाब में भेजे गए अपने जवाब अभियोजन पत्र साक्ष्य प्रदर्श पत्र क्रमांक 12
दिनांक स्वयं में स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि की है, मतलब अर्लियर व्हाटसोएवर ही सेंट टू द हार्ड अथॉरिटीज, उसने पुष्टि की कि मैंने भी भेजे, मेरे हस्ताक्षर है उसमें। इससे स्पष्ट है कि अभियोजन पत्र साक्षी क्रमांक 10 ने उक्त स्पष्टीकरण के उत्तर की पुष्टि की है। दिस इज अ फाइंडिंग। इससे स्पष्ट है कि अभियोजन पत्र प्रदर्श 12B के अंतिम पैरा में श्री तिवारी ने लेख किया कि नस्ती पटेल द्वारा अध्ययन के लिए ली गई थी और पटेल अलमारी में रखे थे। चूंकि पटेल पुलिस ITI भोपाल के प्रभारी थे, इसलिए मैं चाहकर भी नस्ती वापस नहीं ले सका। पटेल द्वारा कहा गया कि मैं प्रभारी हूँ, तो सिंपल लॉजिक, उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी हूँ, नस्ती का अध्ययन कर रहा हूँ, इसे बाद में वापस कर दूंगा। जिसे श्री JP पटेल द्वारा वापस नहीं किया, जिसके लिए वही जिम्मेदार है। उन्हीं के विरुद्ध वह नस्ती थी जिसके लिए श्री पटेल ही दोषी हैं। यद्यपि उक्त अभियोजन साक्षी पक्ष विरोधी हुए, किंतु उन्होंने अपने कथन में उक्त अभियोजन Before the inquiry officer, he has said that this man took that file. Yes. Patel took the Patel file. took that file. And then never returned it. Never returned. It is, my lord, This is The file pertaining to the complaint. that is incorrect, my lords. May kindly see, before inquiry officer, he has not said that. तो कहाँ है उसका इसी statement? में देखें सर, इसी में इसको सर एक बार देखें, ये क्या कहता है। My lords, प्लीज Statement पढ़ दीजिए ना। हाँ, पेज 39 को देखें सर फिर से। आप इसका statement पढ़िए। Yes, Lord. हाँ, इनका स्टेटमेंट आप पढ़ तिवारी लीजिए, का उससे पता statement. लगे। Before the inquiry officer. Yes. ने अपने कथन में बताया कि मैं ये स्पष्ट ITI में पदस्थ हुआ था, तो मैंने ITI स्थापना रिपोर्ट का चार्ज दिनांक को LK राठौर से लिया था। चार्ज इसकी छायाप्रति 1 से लगातार 8 पन्नों में। ये एक मिनट, ये राठौर कौन है भाई? ये LK राठौर। No, this man took charge from whom? LK राठौर। Rathore. Yes. And the petitioner came at which stage? petitioner पिक्चर में कब आए? इनके बाद, ये तिवारी के बाद चार्ज में। Sir, petitioner is their superior. Petitioner is their superior. The allegation against him is that this file which they are saying, this file was received by the petitioner from this BK Tiwari and it was never returned to BK Tiwari. So they say that the petitioner has misused that file. This is the allegation. हाँ पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, आप पढ़िए। चार्ज की छायाप्रति 1 से लगातार 8 पन्नों में, चार्ज पृष्ठ क्रमांक 3 के सरल क्रमांक 4 पर प्रतिनिधि नस्ती पृष्ठ संख्या 1 से 202 तक, चार्ज लिस्ट की पृष्ठ संख्या 5 से सरल क्रमांक 57 श्री JP पटेल की शिकायत नस्ती पृष्ठ संख्या 1 से 46 तक का इंदिराज है। मुझे चार्ज लेते समय प्रतिनियुक्ति संबंधी फाइल चार्ज में मिली थी, किंतु JP पटेल की शिकायत नस्ती मुझे चार्ज में नहीं मिली थी, ना ही वह फाइल प्रचलन में थी। कल्याण लेखा पत्र दिनांक 12/5/6 द्वारा प्रतिनिधि संबंधी नस्ती के बारे में जानकारी चाहिए, जिसका जवाब मैंने 2/6/2006 जिस लेटर को पुष्टि कर रहा है कि जो जानकारी मांगी गई थी उसमें मेरे हस्ताक्षर, उसकी पुष्टि उसने की है। ये फाइंडिंग उसके इंक्वायरी रिपोर्ट में भी आई है। जिसका जवाब मैंने 2/6/2006 द्वारा भेजा था, जो अभियोजन साक्ष्य प्रदर्श पत्र 12 है, उस पर A से A तक मेरे हस्ताक्षर, इसकी पुष्टि में करता हूँ। And thus, my lord, the charge number 1 is proved. अगले पेज में इनका क्रॉस एग्जामिनेशन तिवारी। इसमें रेलेवेंट कौन सा है? इस चार्ज, इस पर्टिकुलर चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन? मारो उसमें प्लीज सी, दैट इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, मेरी शिकायत संबंधी नस्ती क्या वास्तव में आपको चार्ज में नहीं मिली? बिकॉज ही सेज इन हिज मेन स्टेटमेंट द एलिगेशन इज मालूम दैट पिटिशनर के शिकायत से संबंधी नस्ती पिटिशनर ने बीके तिवारी से लेकर गायब कर दी। तो उन्होंने पूछा कि मेरी शिकायत संबंधी नस्ती क्या वास्तव में आपको चार्ज में नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं प्रचलन में थी। So the very genesis of the charge that the file was taken away from Tiwari by the petitioner, that goes away because he says मुझे मिली नहीं और प्रचलन में भी नहीं थी पाई।
तो इसलिए वो जो इनका चार्ज है, पहला चार्ज, वो तो वैसे ही फ्लैट हो जाता है। एंड नॉट ओनली वंस, बिकॉज इन मेन स्टेटमेंट ही सेज ये फाइल मेरे चार्ज में नहीं आई, और क्वेश्चन आंसर में भी कहा कि ये फाइल मेरे चार्ज में नहीं आई। No, this, please explain that this file had been asked by the petitioner from Mr. Tiwari. No, where is that, Mano? That is not there. That evidence is not, has not come in the inquiry. Malords should kindly see, Malords will see the inquiry report. The inquiry report has to be based on the statement made by the witness. The witness says ye file rightly or wrongly, whatever he says. Because the question is, Malord, the witness says that the ये file ना मुझे कभी मिली नहीं है, प्रचलन में थी. Now that evidence is now they are relying on a preliminary inquiry. This petitioner had taken an objection that preliminary inquiry was conducted at my back. I have read that order passed by the disciplinary authority. He said a preliminary inquiry was held at my back. Now those statements cannot be utilized, my lord. The inquiry which was held at the back of the petitioner, they are relying on some letter written by Tiwari at that stage. Now the Tiwari himself has been examined in the inquiry how the previous statement made by him can be relied upon. It could have been used to confront him. No, has he, the charge is that that you asked for that file from Mr. Tiwari. मतलब where is that evidence? That evidence is not there. What, ऐसा statement कहाँ आया इसमें? ये इनका स्टेटमेंट पूरा पढ़ दें तिवारी का, जिसमें तिवारी ये कहता हो कि मैंने फाइल मांगी थी और फाइल इन्होंने मुझको दी थी। ये इंक्वायरी में, अगर ये इंक्वायरी में ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की स्टेटमेंट क्या है? Lordship, for a moment, kindly appreciate annexer P8, page number 36. Page number 36. Yeah. Yes. Para number 2. It is there. श्री एल के सरोवर प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा पुलिस मुख्यालय से पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्री बी के तिवारी को स्थापना का चार्ज देते समय चार्ज लिस्ट के सरल क्रमांक 57 पर दर्ज आरोपी जेपी पटेल की हाउसिंग सोसाइटी संबंधी शिकायत की नस्ती चार्ज में दी गई थी, जिसे तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक श्री जी आर मीणा द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। प्रभारी अधीक्षक की पदस्थापना के दौरान आरोपी द्वारा उक्त शिकायत नस्ती अध्ययन हेतु श्री बी के तिवारी से ली गई थी। ये स्पष्ट है, उनसे ली गई थी, उसमें दर्ज है, ली गई थी। तथा बाद में ये क्या पढ़ रहे हैं आप? He is reading Malord again inquiry report. Inquiry report page number 2. That is on page 36. Page number 36. 36 of the petition. What my friend is reading, those are the allegations. अगर आप पहले पेज से देखेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर ने उसको ऊपर टाइटल दिया है, घटना का संक्षिप्त विवरण। हाँ, ये घटना का संक्षिप्त विवरण। इट इज नॉट द एविडेंस कलेक्टेड इन द इंक्वायरी, दिस इज द इंक्वायरी ऑफिसर हैज नरेटेड व्हाट आर द चार्जेस। देन नेक्स्ट पेज में वो आरोप को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पेज में the narration is that Lordship, what record says. फिर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है ना। अगर इंक्वायरी ऑफिसर ही कह सकता है कि ये सब हुआ है, तो फिर इंक्वायरी की जरूरत कहाँ है? इंक्वायरी ऑफिसर, फिर इंक्वायरी की देयर इज नो रिक्वायरमेंट। इंक्वायरी ऑफिसर कैन से दीज आर द एलिगेशन, चार्जेस आर फाउंड प्रूव्ड। The inquiry report actually starts from page 38. ये तिवारी से फाइल इन्होंने ली कभी, कैसे गई उनके पास, इसके बारे में एविडेंस आई है? ये वो प्रश्न आपने पूछा होगा ना इससे? वो प्रश्न नहीं पूछा। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रॉस में है सर। क्या है? बीके तिवारी का स्टेटमेंट देखें सर। वो तो कहता है मुझे चार्ज में नहीं मिली। हाँ, वो कहता मुझे मिली ही नहीं। तो जब मिली नहीं तो फिर देने का प्रश्न ही नहीं होता। और चार्ज में इनका स्पेसिफिक चार्ज ही यह है कि बीके तिवारी से मैंने फाइल लिया, स्पेसिफिक चार्ज। What about appeal?
Appeal, my lords, kindly see that appellate order is annexure P1. ये तो नॉन क्रिप्टिक मतलब इट्स अ नॉन स्पीकिंग एंड क्रिप्टिक ऑर्डर. Kindly see, my lord, P1. ये लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो उससे पहले इन्होंने कहा है क्या क्या हुआ है. वरिष्ठ प्रशिक्षण मालॉर्ड्स में प्लीज सी पेज 12. This is a non-speaking order. नॉन स्पीकिंग. So totally non-speaking order. No finding. We will send it back. But after so many years, my lords, may please see that the Supreme Court says, my lords, that it's a charge sheet issued to this petitioner. My lords should kindly see the date of the charge sheet. When? So at this stage, my lord, it may not be 2009, my lord, the charge sheet is issued in 2009. Now, no useful purpose will be served, my lord, after 13 years, 13, 14 years. इसमें तो वैसे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिक्वेस्ट हो जाती है अगर चार्जशीट 10 साल में जारी की जाती है. What is his age? Is he in service? Age, man, he has retired from service. Retired. Yes. It's indicating that this petition under Article so and so has इसमें been adult लिखा है but assailing the. he is now retired, man. Primarily assailing the order of punishment of withholding of 2 annual increments with cumulative effect by order dated so and so. Lordship, kindly appreciate one last submission, Lordship. Page number 54 of the record, Lordship. It is 53 onwards. ये पत्र है जेपी पटेल वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी तकनीकी पुलिस को डीडीओ प्रभारी अधीक्षक आईटी भोपाल द्वारा कार्य का प्रभार दिया जाता है. इनको प्रभार दिए गए जेपी पटेल को. एट नेक्स्ट पेज लॉर्डशिप जेपी एट एंट्री नंबर 57 श्री जेपी पटेल की शिकायत नस्ती क्रमांक 1 से 46 तक ये इनको मिली. जब ये इन्होंने प्रभार लिया था ये LKS राठौर से, उस समय इनकी जो शिकायत की नस्ती थी वो इनको प्रभार में मिली थी. उसके बाद वो नस्ती गायब हो गई. क्या पढ़ रहे हैं आप? लॉर्डशिप ये जिस पत्र के द्वारा इनको प्रभार मिला था तो ये प्रोड्यूस करेगी इंक्वायरी में. लॉर्डशिप ये रिपोर्ट है, रिकॉर्ड का पेज नंबर है पेज नंबर 53 ऑफ द रिकॉर्ड. My friend is reading as if something. My lords, may please see the inquiry report. Where is the finding recorded by the inquiry officer regarding this document? He has to see the inquiry report. No, because there was another charge 3, which said that you have destroyed the whole charge list. Maybe that was because you wanted to show that he is trying to suppress that fact. कि अगर चार्ज लिस्ट ही नहीं मिलेगी तो फिर प्रूव ही नहीं हो पाएगा. चार्ज नंबर 1. So, but this charge 3 has been not found proved, or has it been found proved? As per inquiry report, lordship, Not been found. Committed. ये charge number 1 proof हुआ है. This is my humble submission, lordship. Yes. Stop. The challenge is further made to the appellate order dated so and so P1, by which the appeal preferred against the said penalty has been rejected, allegedly by a non-speaking order. Next. Though this court was initially of the view that the matter may be sent back to the appellate authority for passing a speaking order, but looking to the fact that the petitioner has since retired and the matter is more than 11 years old, it would be appropriate to dwell upon the merits of the case. Next one. The petitioner, while working as superintendent. My lord, he was. My lord, he was. I'll just point out. प्रभारी अधीक्षक ITI. In charge, superintendent ITI. In charge.
Charge Superintendent, ITI. जी Jabalpur. भोपाल Bhopal. Was issued with a charge sheet. P2, dated sons. Alleging the following charges. Quote कर देना. Only 2 charges? 4 charges. Charge sheet contained 4 charges. हाँ ये 14.4 पे. Charge sheet is P2, my lord, that is. P3 क्या है? P2, my lord, that is on page 14. No, what is P3? P3 is the अच्छा ये आपने सीक्वेंस नहीं लगाया इसको. P3, my lord, after the inquiry was completed. उल्टा सीधा लगाया क्रोनोलॉजी. हाँ ये chrono this document is incorrectly. After the full stop, after the petitioner preferred a reply denying the charges, an inquiry was held under Rule 14. Well, Rule 14 of the CCA rules, 1966. But this did not go to the tribunal. Acha. State government. Sure. The prosecution examined various witnesses, including one Shri Tiwari. क्या नाम है उनका? BK Tiwari, Assistant Sub Inspector, Complaint Section, who made the following statement. Quote कर देंगे. आ गया statement इनको. Where is the statement? Page? P7 or page 31. P7. Report कर देंगे. Next subpara. After conduction of the inquiry officer returned a finding that the charge number 1 was proved. Charge number 1 and 4 were proved. But there was no evidence as regards charge number 2 and 3. Next, subpara. Accordingly, a show cause notice was issued to the petitioner to respond to the implicative inquiry officer's report. Inquiry officer's report जो है ऊपर वो P8 कर देना उसको. Next, after the petitioner responded to the inquiry officer's report, the disciplinary authority by the impugned order P5, based on the implicative findings rendered as regards charge 1 and 2, inflicted the penalty of withholding of 2 annual incomes, non-cumulative, cumulative, by the order so and so. The petitioner unsuccessfully preferred an appeal, which was dismissed by P1. Next one. Learned Senior Counsel Sri Gildyar, referring to the statement of the prime management witness BK Tiwari, submits that the said witness has nowhere stated that when and how the file pertaining to the complaint against the housing society was taken from him by the petitioner. It is submitted that in the absence of any such material on record, the respondents have wrongly relied upon
the statement of the said witness B.K. Tiwari recorded during preliminary inquiry, and have found the charge to be wrongly proved. Full stop. Next one. On the other hand, learned counsel for the state submits that submits by referring to the inquiry officer's report and the deposition of said Sri Tiwari. That the charge number 1 stood proved on the basis of preponderance of probability. Next para. Next full para. After having considered the submission of the submission of the counsel for the rival parties, this court is of the considered view that the bare perusal of the, where is that statement? Tiwari का statement कहाँ है? That is annexure P7. P7 or page 31? P7. Seven. Statement of Sri so deposition of so including the cross-examination. It is evident that this said witness has not has stated about taking over charge of the complaint section. File relating to complaint. जेपी पटेल की शिकायत नस्ती. Stated that neither did he receive the complaint file as regards the petitioner. प्रचलन में थी से क्या मतलब है इसका? वो उनका कहना कि ऐसी कोई फाइल चल भी नहीं रही थी. There was no file which was in progress. प्रचलन में नहीं थी. Not received such file. Full stop. However, what is noteworthy is neither the examination in chief nor the cross-examination of this witness establishes that the petitioner had taken the file from him, taken the file of the complaint from him. And therefore, the implicative findings as regards charge number 1 rendered by the inquiry officer and relied upon by the disciplinary authority seems to be perverse. Next part. Apart from charge number 1, the charge which has been found to be proved is charge number 4, but the same is consequential in nature and can stand only if the charge number 1 stands, not on its own. Next part. The charge number 1, on the basis of material and evidence on record, was not proved, and yet the disciplinary authority returned a finding of guilt. Next para, the impugned order therefore, impugned order of penalty therefore is perverse
Petition stands allowed. The impugned order of penalty as well as the appellate order stand quashed. The next consequential benefits flowing out of the present order be extended to the petitioner within, including consequential lateral benefits within 4 months. Grateful. नाम बताएं अपना लोकेश जैन गवर्नमेंट एडवोकेट पैनल Item number 6, Miller type prefer pass over. Item Number 6. हाँ. Next case, Miller type prefer pass over. 6 कहाँ लिख दिया मैंने 9 में लिख दिया 9 में क्या था 4 में क्या था 5 मिनट फाइनल फाइनली मारी और ये 5 नंबर अलाउड हो गया और 6 में क्या है 6 में मिनट अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट वर्क है इसको पास ओवर में 2:15 पे रख लें फाइनली हर्ड होना चूंकि आइए पुराने केसेस हैं बहस करिए खत्म करिए केस नहीं वो मिलट आई हैव टू पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल एंड ड्रॉप हिज बिकॉज आई हैव टू पिक अप द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल उसको पास ओवर कर दें हाँ यही हम पास ओवर बोल रहे हैं 2:15 पे इसको लेना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है हाँ इसमें फाइनली होना है मिलट cancelling the appointment of petitioner on the post of कोटवार जी अच्छा क्यों कैंसिल कर दिया कैंसिल कर दिया मिलट इसमें इशू ये है कि बाबू राव के 2 बच्चे थे उमेश नागले पिटिशनर और परसराम बाबू राव की डेथ के बाद उमेश नागले की परसराम की अपॉइंटमेंट हुई 2010 में 2010 में परसराम की डेथ के बाद फ्रेश अपॉइंटमेंट की प्रोसेस चालू होती है जहां 3 एप्लीकेशन आती हैं उमेश नागले और परसराम की वाइफ लंच के बाद जी और कोई है ना Housing the right of respondent to file. जेल नंबर 7 से आकाश चौधरी अनूप नायर I'm praying the matter will be taken up next week, my lord. The matter may be taken up on next week, my lord. The senior is on his legs before another bench, my lord. It is to be argued finally. No, why next week? My lord, the senior is on his legs before another bench, my lord. Legs. मैं जवाब आ गया आपका Yes, my lord. हाँ जवाब तो है फिर तो why doesn't he argue? Let him come. We are passing it over. बात और कॉल कर दी जेल नंबर 8 श्री राहुल मिश्रा आर के तिवारी Yes, बताइए. Worship, petitioner is basically claiming the first community from the date of appointment while he was regularized on 1/1/91. Therefore, community is given from the date of his regularization.
Reply is there. So the Kramonati has been given From the date of his regularization, 90, 91, not 85. not 86. So circular is there. My lord. Circular. No, Lord, even petitioner has not found the circular. Hmm? Petitioner has also not filed the circular. This is 27/3/2001. Now it is there, P7, page 24. So this 10 years will be counted from which date? Regularization or the initial appointment? तो देख के रखिए पास हो Bill number 9, C. R.V. Tiwari, Gaurav Tiwari. My Lordship, there is an adjustment in this particular case. Adjustment. Yes, ma'am. Whose adjustment? Grishma Jain, sir. Grishma Jain. Adjusted on behalf of Sana Khan. Respondent number Mr. Jain is for whom? 234. Respondent number 234. क्या मैटर क्या है आपका? My lord, claiming some dues of the petitioner, my lord. They have filed the reply, my lord, and stated them some amount has been paid, but they have not considered the amount of ninth wage board demanding by the petitioner, my lord. So you have said that you have made representations. Representation decide क्या है इन लोगों ने? No, my lord. रिप्लाई में क्या कहा है? रिप्लाई में इन्होंने बोला कि हमने कम My Lordship, रिप्लाई में हमने ये कहा है कि इनकी जो पिटीशन है वो इनफ्रक्चुअस हो गई है क्योंकि हमने सारा जो पेमेंट है इंटायर पेमेंट हमने डिफरेंट डेट्स में पे कर चुके हैं. Where is the chart showing that payment has been made? Yes, my Lordship, this SLP payment is there. ये जो पैरा 2 में इन लोगों ने लिखा है रिप्लाई में P2 में माय लॉर्ड हमने मांगा था कि नाइन्थ बे ये इन पैरा 2 ऑफ देयर रिप्लाई माय लॉर्ड उसमें देखिए उसमें लिखा है कुछ पेमेंट्स हुए हैं आपको ये SLP का पेमेंट इन्होंने बोला है कि हमने किया है. हाँ. और दूसरा पेमेंट माय लॉर्ड 21,913. Yes, ma'am. ये इसका किया माय लॉर्ड एंड अदर अमाउंट 21,234 एंड 15,072 ये बोनस का है. पर इसमें माय लॉर्ड नाइन्थ बेज बोर्ड का जो हमने एरियर्स और वो मांगा था उसका कहीं भी रिप्लाई नहीं किया. उसके बारे में रिप्लाई में क्या कहते हैं? ये इसमें से दो पेमेंट तो हमने प्राप्त किया है माय लॉर्ड. फर्स्ट 22,806 का SLP वाला और नेक्स्ट पेमेंट माय लॉर्ड आपका डिमांड कहाँ है वो वेज बोर्ड वाला? बेज बोर्ड का माय लॉर्ड ये हमने P3 माय रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेल पेज 15 माय लॉर्ड. प्रमोशन के आधार पर किए गए वेतन वृद्धि राशि एरियर्स और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 9 के आधार पर निर्धारित वेतन वृद्धि राशि का भुगतान. तो इस पे इन्होंने कोई वो नहीं किया. नाइन्थ वेज जो हमारा पेंशन इंक्रीज होना चाहिए वो भी नहीं किया. इस बारे में रिप्लाई में भी कुछ नहीं बोला कि नाइन्थ वेज का एरियर्स मिलना चाहिए नहीं मिलना.
आप रिटायर कब हुए? ये रिटायर्ड हुए माय लॉर्ड 31/1/2012। ये वेज बोर्ड का जो 9th वेज बोर्ड का बेनिफिट है, कब से मिलेगा आपको? विथ इफेक्ट फ्रॉम? ये प्रमोशन का जो ऑर्डर था माय लॉर्ड एनेक्सर P2 पेज 30। ये दिस बेनिफिट दैट यू आस्किंग फॉर 9th वेज बोर्ड का, ये आपको कब से मिलना है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 4/2/2012 माय लॉर्ड। दैट इज दी 12, तो ये आपके रिटायरमेंट के बाद हुआ? ये माय लॉर्ड उसी समय का हमारा जो प्रमोशन कंसीडर हुआ 4/2/2012 से हुआ। इसका बेनिफिट इन्होंने डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद हमको इम्प्लीट किया, उस समय तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था उस ऑर्डर। इसके बारे में माय लॉर्ड एनेक्सर P6 है, हमने आरटीआई से मांगा था जानकारी। P6 पेज 18 माय लॉर्ड। We can direct them to decide on this issue. Yes, my lord. We'll dispose it of. Yes. Yes, ma'am. The present petition under so and so has been filed by the petitioner who attained the age of superannuation on 31/1/12 Yes, ma'am. from the post of mining Sardar, Western Coalfields Limited, Damua Colliery, Kanhan area, district Silwar, has prayed for the following relief. Court. Next one. After issuance of notice, the respondents have come out with the reply, with the response that the following benefits have been paid, and therefore the petition has become infructuous. 1. Amount and item, don't call it rupees 22,806 against SLP payment, white check so and so, dated so and so. Rupees 21,913. ये क्या है 21,913? इस सिमिलरली अमाउंट ऑफ रुपीज इसका हेड नहीं दिया है कि किस हेड का है। White check number so and so, dated 1913 has been paid check number here. 21234.38 as regards salary paid on 21/10/13. Then 1572 as bonus, as quarterly bonus paid on 21/10/13. Next part. After revealing the aforesaid, the respondents contend that nothing further is due to be paid to the petitioner. Next part. However, the learned counsel for petitioner, drawing the attention of this court to the representation P3. Yes, ma'am. P3 submit that the benefit under the 9th wage board. Wage board, 9th wage. 9th wage board has not been paid. The pay revision under the 9th wage board has not been extended to the petitioner, and neither there is any response in this regard in the reply. Next part. In view of the above, it would be appropriate that the employer dwells upon the aforesaid issue before this court enters into the realm of adjudication. Next one. Accordingly, without commenting upon merits, the petition stands disposed of. Direction to the respondents to decide annexure P3 as so far as it relates to the claim for pay revision under the 9th wage board by passing a speaking order within 2 months of the date of receipt of copy of this order. Obliged. हाँ कम बीच में उठे थे ना चले। Chair number 10, Shri Shailesh Tiwari.
Paresh Parikh. My lord, I am praying for a week's time. This matter may kindly be taken up in the week commencing 20th, my lord, because I am presently not well. Yes, Number 10. Yes, number 10 में क्या है? Lord, I am praying for a week's time, my lord. This matter may kindly be taken up in the week commencing 20th, my lord. Oh, let us find out whether we can decide or not decide. It is to be decided on the next date, my lord. These are all matters Of 2013. Yes, Lord. Because, my lord, I am in fever since last week, my lord. मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता matters which should have gone to the tribunal. हूँ. But for the tribunal is not last indulgence, my lord, I will be. I may kindly begin the time. I have not taken any time. Last time, my lord, I have taken time for filing documents, my lord, which I have filed. No. Is it a short point or a detailed discussion is required? What is it, Mr. Dharmadikar? Well, he is actually agreed by his non-appointment On the post of forest guard. Yes, ma'am. Actually, 2 persons were granted, given equal marks, my lord. Why were you not appointed? My lords, initially, my lord, he was not granted because the private respondent, the marks were equal. So as per the circular, he was senior in age. So therefore, he was granted the appointment. Then petitioner challenged that the petition was, in that my lords have held that no interferences can be made with regard to the appointment of the private respondent. That was correct. But the petitioner's case should be reconsidered in the light of some circular. So that petition was disposed of with that direction. Then thereafter there was a speaking order, and that speaking order, the petitioner's claim has again been rejected. So against that, this is the second round of litigation. Actually, thereafter in 2017, my lord, some posts were sanctioned by the state in pursuant to the orders passed by this honorable court under the similar terms of another cases, my lord. No, that must have been a fresh recruitment. No, it is not fresh recruitment. The posts were enhanced, my lord. 497 posts were enhanced in 2017 in pursuant to the recruitment process conducted in the year 2008, my lord. Based on the same select list. For the same select list. For that, my lord. Select list was alive by that time. Yes, Lord. At that time, Lord, the posts were also allotted to Jabalpur division. There was an order of this honorable court that the bifurcation from other districts to the district of Jabalpur is not permitted. Those pleadings have to be, because my lord, the select list gets exhausted after a period of some. But it was enhanced by the respondent state, my lord, because there were so many litigations. And thereafter, the list, the validity of the list was enhanced by the department. In the impugned order, my lord, only thing which has been stated is that there were only 16 posts. That is at page, if my lords may kindly see one para, that's the only grievance of the petitioner at page 49. 48 is the impugned order P10. And 49 is the order which has been passed pursuant to the order passed by the writ petition. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर दारा में 10/9/2013 को पारित निर्णय निर्देश के अनुपालन में दैनिक वेतन भोजों की वन संरक्षण पद की भर्ती हेतु शासन परिपत्र को परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि 3 दिनांक 8/7 द्वारा प्रतिवादी निर्देशों के तहत अंक प्राप्तकर्ता राजकुमार कुशवाहा, जो कि राजकुमार पटेल से जन्म तिथि में वरिष्ठ स्वयं द्वारा आवंटन के 9 एवं पिछड़ा वर्ग, दिस इज कंसर्निंग द पिटिशनर, पिछड़ा वर्ग के 16 पद प्राप्त हुए हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में राजकुमार कुशवाहा 16वें स्थान पर थे। कि राजकुमार कुशवाहा की नियुक्ति उचित एवं नियमानुसार पाई जाती है तथा अन्य पिछड़ों में राजकुमार की नियुक्ति की जाना पटेल, तो राजकुमार पटेल was on 16, there were only 16 posts, so he were on at the 16th place. The petitioner thereafter came to on the 17th place. So this is, there was no post at that time, therefore he could not have been on. That is the order. So then, now, when did fresh vacancies arise? That is not known to us, my lord. They might have filed. I have some filed the copies of that circulars of this. Then we'll have to. Through IML, I have filed the circulars which is issued in the year 2017, by which 497 posts were enhanced by the department. Then this petition. It has to be fresh recruitment. No, not for fresh recruitment. This is in pursuant to the recruitment of 2008.
under the same set of selection. 2010 select list cannot be kept alive till 2017. It is actually kept since 2018, my lord. Where is that? Well, the copy which I have actually filed with this My lord, then petition. this petition these are- में इसलिए मैं कह रहा हूँ मिलट इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा इसको अगर 20 तारीख को रख लेंगे तो बड़ा ठीक हो जाएगा मैं पूरी चीज आपको बता दूंगा ही हैज ए जेन्युइन केस so एक्चुअली my lord, then this petition will be disposed of if suppose because it cannot if be the post is enhanced my lord they may consider afresh to me my lord I agree with this if the post From that select list. Yes, yes my from lord that from that select list the post is enhanced in 2017 my lord and if my case covered with the circular of 2017 सिलेक्शन कब हुआ था 2010 में 2010 में हुआ था 7 साल तक कैसे इन्होंने हमको 2013 में रिजेक्ट किया मिलट पहले to show us that there was some order extending the validity of the हाँ, select list. that I have actually For 7 filed years, 8 but years. I could not trace at this point of time मिलट so that IA may be supplied to us also. नहीं बिगर सप्लाई तो हम फाइल ही नहीं कर सकते रजिस्ट्री लेती ही नहीं है That is जब the तक हम only- सप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो फाइल कौन सा है आपका? देयर आर 2 IAs मिलट Then that is the only point. circular actually dated 4/1/2017 is there Additional documents. yes lordship 4/1/2017 dated is there 3-1. 3/1 and 4/1 yes lordship इसमें लिखिए that कॉपी आपको दे दी है yes सप्लाई की है नहीं मिली आपको let a No, it is not. copy of IA 599 of 17 applications also be supplied to the council for the state. What do you want? 20 फरवरी वाले वीक में रखा मिलट मैं इसको अभी आजकल में दे देता हूँ नहीं, but why are you not arguing today? yes Why are you not arguing today? because मिलट आई एम नॉट वेल एक्चुअली मेरे का आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं इसलिए Council for the petitioner states that he is not well after 4 weeks. एनी वीक कमेंसिंग दे दे मिलट अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर क्या है? नहीं मेरे को जल्दी है मैं खुद बीमार होने के कारण नहीं तो मैं तो करने के तैयार था भाई समय आज है जी हाँ आज का समय अपने पास है हाँ कल का समय हो ना हो किसी को नहीं मालूम यस मिलट if you want to utilize the time please do it otherwise nobody knows when your case will come out. आफ्टर 2 वीक्स कर दीजिए मिलट बस तय करना आफ्टर 2 वीक्स All right, after 2 weeks. yes जेल नंबर 11 श्री दीप नारायण सिंह There is an amendment application to IA number 15766. Whereby, my lord, by which I want to replace relief clause 7(5). There was a one typing error in the earlier relief, my lord. That's what I want to substitute. Right, will allow this. So you are substituting that paragraph. Yes, Lord. Allow कर दीजिए. Let paragraph 7(5) of the ground clause. Yes, Lord. Ground clause. The No, my lord, it says relief clause. relief clause. 7. Relief is never 7. It's 6 or 5. Relief 7. Relief clause. ये तो substitute कर चुके हैं आप. My lord, It is already there. Actually, 7.5 was amended, my lord, but there was an error in one of the date. That's why I needs to replace the R7.5 substitute. पूरा paragraph क्यों substitute कर रहा है?
Why can't you correct the date only? My lord, if my lord permit, then Which date is wrong? my lord, that is 3/7/1991 in the third line from the bottom, fourth line from the bottom. It was read as 1/1/10/2003, my lord. However, it needs to be 3/7/1991. This is a case of supersession. Let the substitution of the amended law, para 7(5) of the relief clause be made within 15 days. My lord, our daytime may be Next granted. para. State is free to file a additional reply if it is so advised. Some recommencing because it's of 2013. I am ready to argue the matter of my lord. No, there was time today. Then I am Tomorrow ready, we my don't lord. know If we my have lord time. permit, then I will, after amendment, I am ready to argue this. That will happen when we don't know. After amendment, if my lord permit, I will Well, amend it's, that. in that case, we may be granted time to file additional return. That Because- we have granted. Yes, ma'am. CL number 12, Iqbal Ahmed, Shim Mohan Lal Saxena. After what? 15 days. After 2 weeks. This case, Lordship, pleading also completed, Lordship. Pleading also completed, Lordship. This is the matter of termination, Lordship. As the post of contractual employee, as a post of district program manager, Lordship. I have challenging the two order, Lordship, Annexure P1 and P2, Lordship. Annexure P1, page number 17. I read, Lordship. Yeah, I read. P1. Lordship. Page number 17, Lordship. P1 से क्या हुआ है? Sir, there are 40 charges against him. 38 have been found proved by this impugned order 13. After inquiry. After inquiry. Though she was a contractual employee, but after the orders of this honorable court in the previous round of litigation, inquiry was conducted in terms of the agreement of contract. And this is not a regular departmental inquiry, but it is a termination after inquiry, conducting inquiry. 38 charges were found proved against her out of 40 charges. Which किस post पे थे? she was, my lord, district program manager. इसको तो सुनना पड़ेगा. हाँ, इसको सुनना पड़ेगा. Detailed hearing. We have even the records were called by my lords. The records are here. Record है इसमें. Record है. जवाब है. But जवाब भी है, but record को, if he is pressing for each and every charge, then my lords will have to scan every charge because 40 ground, Lordship. or if he incompetent or competency की. So what I will request because there is rejoinder is there, but my lord, the only my request to my colleague would be that if he is having any ground with regard to non-adherence of natural justice or some flaw in the inquiry, then he may point out that, because that I'll flag it in the record that some document was not supplied, some relevant material was not आप supplied. मेरिट पे चैलेंज कर रहे हैं या प्रोसीजरल कोई लैप्स है? Lordship, judgment. जजमेंट बाद में, जजमेंट बाद में. जजमेंट तो अलग. फैक्ट्स की बात करिए. Lordship. मेरिट्स पे चैलेंज कर रहे हैं कि भाई एविडेंस जो आई है उसके बेसिस पे चार्ज प्रूव नहीं होता है, या फिर आप कोई प्रोसीजरल लैप्स बता रहे हैं? Yes, madam. Procedural lapse, then I'll have to, he क्या will है? have to point it out so that I can flag it in the record of the DE. प्रोसीजरल लैप्स क्या है इसमें? अपील हुई थी इसमें? नहीं. No, Lordship. No. But she was a contractual employee, therefore Lordship. was not under 66 rules. Lordship, agreement also an exhibit P3, Lordship, page number 46 kindly may be seen.
आज तो नहीं हो पाएगा, फाइनली सुनना है इसको, Lordship. इसको एडमिट कर लेते हैं और आप मार्च में लगा देते हैं। Already admitted. Admitted है It is Lordship. already admitted, my lord. आज क्यों आए आप? It is listed for some IA for deciding the matter at motion stage and for appropriate directions. Application for appropriate direction. Admitted on 7/12/2016. Next, this case has already been admitted on Swansea. Next, case has come up for consideration of IA Swansea, which after due consideration is disposed of with direction that the matter be listed in the final hearing list of March 26. Against me, mark Lordship D.K. Shukla. आपका नाम? Lords. D.K. Shukla for petition. Chair number 13, Dr. Rashmi Pathak, Pushpendra Yadav. Your Lordship, in this matter, I'm praying for 2 weeks' time to file rejoinder, Your Lordship. Rejoinder? Yes. When did you receive the reply? Reply has been filed on 7/2/17, Lordship. Your Lordship, reply, yes. तो जवाब आ गया है? Yes, Your Lordship. Reply has been filed. Reply was filed 6 years back. Your Lordship, in this, we had applied for some relevant order sheets of the appellate authority, Your Lordship, for the appellate proceedings going on. So we have received it really late, Your Lordship. That is the only reason. That admitted. इसमें लिखिए that reply to the petition has been filed nearly 7 years back. Next para. Yet the counsel for petitioner seeks time to file rejoinder. Seeks further time. Next para. The matter pertains to termination after inquiry. Yes, Your Lordship. After inquiry and dismissal of appeal. No, Your Lordship, before inquiry. Inquiry was completed in 2013. Termination of service. Full stop. In view of the above, the petition stands admitted for hearing. Next one. List in the final hearing list. Actually, already admitted. Elected list. Already, this petition is already admitted on 10/2/14. Your Lordship, any weak domestic. IA for what? Change of counsel. Yes, sorry. IA for change of counsel. No, Your Lordship, we have Rashmi Pathak, Your Lordship, has filed the petition. There is not on our behalf, Your Lordship.
चेंज ऑफ काउंसिल की एप्लीकेशन 2018 की है. What has happened to that? Your Lordship, we have not received any such application. Your Lordship, and that application has also been filed by us only, so we would like to withdraw that application, Your Lordship. Change of counsel. We have filed the fresh wakalatnama. So if that IA may be It was withdrawn. listed last time, then said that there's a short point that the appeal has also been decided by the disciplinary authority. Yes, Your Lordship. Appeal has also been decided by after the order of the High Court, Your Lordship. They were not deciding the appeal for a long time, Your Lordship. Then the petitioners had filed an WP seeking that the appeal may be decided expeditiously. You bring that judgment, 2018 Volume 2 MPLJ. It's written in this order. Full bench decision. Yes, Your Lordship. You bring that judgment, we'll remand this matter back to the appellate branch. The order, Your Lordship, the appellate authority has passed the order, Your Lordship. No. The appellate authority seems to be the same as disciplinary authority. This is what your contention was. If it is right, then you come and pass over, bring that citation. We'll dispose of the matter, remand it. Your Lordship, our rejoinder is ready. So if 3 or 4 days time may be given or next week, Your Lordship, then we may, senior counsel has to argue the matter, then it may be taken up finally, Your Lordship. Because we have the documents we want to bring on record are Last order. You come and pass over. We are taking out that citation, you also bring it. Why to keep it pending unnecessarily? Your Lordship, if only we just want to file the rejoinder, Your Lordship. So there were some appellate proceedings that we want to bring on record. That the order sheets of the appellate proceedings. We'll see in passing whether that is required or not. All right. Like, Obliging. CL number 14 C Anuruddh Hingwasia. Rajesh Kumar Tiwari. Sir, I'm praying for 2 weeks time to file rejoinder, sir. when did you receive the reply? Reply, sir, in 21st of December 2022. एक महीने पहले, sir. You are asking for counting of this 69 to 82. Yes, sir. You were a temporary employee then? नहीं, ये प्राइवेट स्कूल में थे सर. प्राइवेट स्कूल को एब्जॉर्ब कर लिया गवर्नमेंट ने सर 1982 में. तो हम उसमें एब्जॉर्ब हो गए सर. एब्जॉर्प्शन के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे एब्जॉर्प्शन में? सर वो मुझे फाइल करना है रिजॉइंडर के साथ में. उन्होंने रिप्लाई फाइल किया अभी, मुझे फाइल करना है सर. As prayed for list after 4 weeks to enable the. सर 2 वीक्स कर दें सर. नहीं आराम से करिए. नहीं सर, बुजुर्ग हैं वो, अभी ठंड की वजह से आ नहीं पाए, नहीं तो अभी रिजॉइंडर में फाइल कर देते सर. इसलिए 2 वीक्स. To enable petitioner to file rejoinders. List after 2 weeks. ओके. नाम बताएं. अनिरुद्ध हिंगवासिया. अतुल द्विवेदी. माइक में बोलिए. अतुल द्विवेदी. पैनल है. पैनल. CL number 15 C Rajesh Kumar Chand. SP Nar. My lord. Petitioner number 1 is wife of deceased and petitioner number 2 is son-in-law of the deceased, my lord.
So petition number 1 claiming a monetary compensation and petitioner number 2 claiming a compensation and appointment of deceased. You are seeking monetary compensation as well as compassionate appointment. Yes, my lord. दोनों कैसे हो जाएगा? As per NCW agreement, my lord, Annexure P11, page number. में जवाब आ गया? Yes, but it has to be heard finally. Yes. Page number 65. File dated on my lord 17/10/2014. Amendment carry out कर दिया आपने? Yes, my lord. File Amendment. reply to the amended petition. My lord. Matter of compassionate appointment. Compassionate appointment. Is it due or not? My lord, she is not entitled. It's a case, first of all, it's a case of death of 98. We have rejected it way back in 2002, 2004. Those orders have not been challenged. We brought out in our reply the order of rejection. That is not under challenge. That is not challenged. That's not been challenged, my lord. No, my lord, इसमें kindly see the annexure P. P7, my lord. P7, page number 58. P7. That is 2007 का order है my lord. Page number 58, relevant para my lord, para 2. श्रम संघ से अनुरोध एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय के साथ मामला पुनः दिनांक 2003 को मुख्यालय नागपुर भेजा गया था, जिसमें कंपनी मुख्यालय नागपुर द्वारा पत्र क्रमांक 16 दिनांक 16 को अस्वीकृत किया गया था। इस मामले में निदेशक कर्मों को बिल्कुल के स्तर पर दिनांक 16 को हुई संघ के साथ चर्चा के आधार पर मामले का विवरण तथ्यों से पुनः कंपनी मुख्यालय नागपुर को कार्यालय पत्र क्रमांक 16 के अंतर्गत भेजा गया है। चूंकि उक्त मामला कंपनी मुख्यालय नागपुर द्वारा 2 बार अस्वीकृत किया जा चुका है, इस मामले पर विवरण कंपनी मुख्यालय नागपुर को भेजा जा चुका, अतः आपसे अनुरोध है विसंकेत मामले को कंपनी मुख्यालय नागपुर में उच्च स्तर पर चर्चा करें। मालूम देर आफ्टर मालूम हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया गया है 2009 में एनेक्जर P9, उसके बाद एनेक्जर P10 माय लॉर्ड। आपके 2002 में जो रिजेक्ट हुआ है वो चैलेंज किया है आपने? इनके रिप्लाई में 2002 का कोई लेटर है? 2002 में इस बेस पे हुआ था कि आपको कोई डिक्री वो नहीं है कि आपके उनके वो नहीं है, फुली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसके लिए हमने माननीय न्यायालय से एक डिक्री ली है 2003 में, पेज नंबर P5 P6 माइनस पेज नंबर 48। तो इसमें रिलेवेंट पैरा है मान लो पेज नंबर 55 का पैरा 11 मान लो, ये डिक्री है जिसमें तो इन्होंने बोला है कि इनके उत्तराधिकारी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए डिक्री है वो आश्रित दामाद है। हाँ, घोषणा की जाती है आश्रित दामाद को मिलता है पॉलिसी अपॉइंटमेंट आश्रित दामाद को मिलता है। यस मान लो एज पर एनेक्जर P11 मान लो काइंडली सीधा P11 का पेज नंबर 65 लास्ट पैरा 9.3.3 if dependence of purpose means the wife, husband, as the case may be, unmarried daughter, son, or legally adopted son, if no such direct dependent is available for employment, brother, widow, daughter-in-law, or son-in-law residing with the deceased and almost wholly dependent on the earning one. ये पैरा already apply my. Then my lord, next page 66 पे my lord. तो डेथ कब हुई है इसमें? डेथ 98 में मैम। 98? यस मैम। उस वक्त क्या पॉलिसी थी? सेम यही एनसीडब्ल्यू एग्रीमेंट ही रहता है, मतलब कोलवेज एग्रीमेंट से ही कवर्ड होता है, पूरे इनकी पॉलिसी है मैनेजमेंट का। Why have you denied, Mr. Nayak? My lord, two things, my lord. First, that occurred in the year 98, my lord. Delay has not been explained coming to your lordship in the year 2014, my lord. How old is this man?
Now he would be 55 as per the order of the trial court, my lord. At the year 2002, he was 33 years. So now he would be 53, 55, my lord. They got some compensation. My lord, now the two things, my lord. First is that the delay they have not explained, So my lord. there are two petitioners. My lord, yes, my lord. Now we offered monetary compensation to the wife, the widow, my lord. That is petitioner number one, but she refused. She is entitled to get that. Yes, my lord. We have specifically stated in our reply, and that has not been repeated. Why refused? Lord, P1 and P2, my lord, refused किया है. And the one more thing, my lord, what my learned friend was stating in his the NCW And number two, petitioner two is the son-in-law. Son-in-law. Now, why he is not entitled, my lord, if your lordship is kind enough to see NCW, the relevant clause, my lord. Clause, what my learned friend had read over, my lord. At page 66, my lord. Yes. My lord, that last clause 3. Yes. In case of death in mine accident or for other reasons, no, my lord, sorry, I'm sorry, my lord, there's not page 65, my lord, clause 9.3.3. I have a page before that one. Yes. It says, my lord, the dependent for this purpose means wife oblique husband, as the case may be, unmarried daughter, son, legally adopted son. If no such direct dependent is available for employment, brother, widow, daughter, death. Now here in this case, my lord, direct dependent are available. So he will not come into picture as long as direct dependent are available. The wife was there. Wife is there. Widow. Widow, she is there. So as long as the first category of dependent is there, it says, my lord, specifically, if no such dependent is available. So she claimed compassionate appointment. My lord, she is entitled to, she was entitled to compassionate appointment or monetary compensation, whatever she chooses, my lord. As long as she is available, this petition number 2 does not come into picture. And main, my lord, my submission is the question of delay, my lord. In the year 98, he expired. 2002, 2004, we rejected. Even assuming for 2007, my lord, what my learned friend read over a letter, we say कि you go, but you are filing in 2014. ऐसे हमारे डिले का पैरा 4 में मान लो I'll discuss all. नहीं बट अगर ये डायरेक्ट डिपेंडेंट अवेलेबल हैं तो आपका क्लेम कैसे बनेगा? बट मान लो ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुगाज बेलर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म भी किया हुआ है मान लो ये जजमेंट्स हैं इसमें. नहीं पॉलिसी की बात करिए. पॉलिसी में ही दिया है मतलब एनसीडब्ल्यू के ही इसमें मैनेजमेंट ही गया था इसमें अपील में भी तो वहां से भी रिजेक्ट होके आई होंगी. It's not those questions, my lord. Here the widow was granted what my learned friend is reading Subhadra's judgment. इसमें किसने क्लेम किया था? इसमें पिटिशनर के वाइफ ने किया. पिटिशनर कौन थे? वर्कमैन्स वाइफ. वर्कमैन्स वाइफ. तो हाउ डज इट अप्लाई टू योर केस? इसमें मान लो इसमें ये क्या है कि जो भी मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन का जो डिपार्टमेंट मतलब मैनेजमेंट के द्वारा जो भी डिले किया गया उसका 7.5% इंटरेस्ट के साथ पूरा पेमेंट दिया गया ग्रेजुटी का सॉरी मॉनेटरी कंपनसेशन. ये विडो को दिया गया था कॉम्पनसेशन बट शी रिफ्यूज्ड. Yes, my lord, we have stated in our reply, my lord. इसलिए रिफ्यूज किया कि हमारा फुली डिपेंडेंट है सिर्फ लड़कियां बस थी इसलिए उन्होंने कहा हमारे सन इन लॉ को एम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम किया था वो रिपीटेड यहाँ लिखते रहे रिप्रेजेंटेशन के. वो अवेलेबल ही नहीं होंगे. Yeah, my lord, I'm also praising a representation regularly repeated कि हमारे ये लिखा हुआ है मतलब पेज 3 के बाद आश्रित को रोजगार पाने है तो निवेदन पत्र my lord पेज नंबर 28. No, will this second sentence can the second sentence be invoked even if the widow or a direct dependent declines? My lord, if it says, my lord, if not available, my lord. Not available. It says, my lord, it's not whether she refuses or not. It's specifically for lordship if not available. My lord, kindly see the page number 66 का पैरा 9.4.0 का थर्ड पैरा my lord. May I read, my lord? That is for disabled worker. What my learned friend is reading. It is not a case of disabled worker. इसमें my lord इसमें लगा if in so for a female dependent are concerned there in कहाँ पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 66 का पैरा 9.4.0 का थर्ड एंड in case
यस माय लॉर्ड। In case of death, ये है इनके डेथ ऑफ परमानेंट डिसेबल ड्यू टू नहीं कोर्स आपको ऑफ, जो पढ़ना है वो पढ़िए, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? ये थर्ड भी है माय लॉर्ड, इसमें सेकंड भी है, पैरा 9.5 सेकंड? सेकंड माय लॉर्ड। हाँ, उसमें क्या बता रहे हैं? इसमें इन केस ऑफ डेथ ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबल ड्यू टू द कोर्स ऑफ अदर देन मैनेज माइन एक्सीडेंट और मेडिकल अनफिट अंडर क्लॉज सेवन टू द फीमेल डिपेंडेंट बिलो द एज ऑफ 45 years, so will be option either the accept a monetary compensation or RF so per month of employment। हाँ, और इसका मान लो 9.4 का जो पैरा थर्ड है फीमेल वो फीमेल डिपेंडेंट कौन है? इसमें डिक्री में लिया हुआ कि सिर्फ एक दामाद ही बस है और कोई है ही नहीं, तो उसको डिक्री के साथ उन्होंने डिपेंडेंट के लिए P6 में डिक्लेयर हो गए मान लो। और एज पर P6 के बाद हमने रिप्रेजेंट किया कि हमारे पेज नंबर P9 एग्जिट P9 पेज नंबर 61 मान लो, इसमें हमने पूरे डिक्री के साथ लगाया हुआ है रोजगार अथवा मॉनिटरी कंपनसेशन प्राप्त करने हेतु अपील। नहीं, ये जो 9.3.3 है, यस माय लॉर्ड। इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? 9.3 इसमें 9.3.3 के बेस पे ही माय लॉर्ड ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसमें आप कवर कैसे होंगे जब तक डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं? माय लॉर्ड हमको ना मॉनिटरी कंपनसेशन मिला ना ही हमको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनने तो डिक्लाइन कर दिया, इनका कहना मना कर दिया उन्होंने। तो इसलिए कि हमको अपॉइंटमेंट के लिए बोला था कि हमारे जो डिपेंडेंट है वो ये इसमें दोनों चीजें मिलती है माय लॉर्ड, मॉनिटरी कंपनसेशन। दोनों नहीं मिलते। डिक्लाइनिंग का लेटर कहाँ है? प्रोजेक्शन का लेटर तो मेरे पास नहीं। एनेक्जर P1 लगा हुआ है माय लॉर्ड, ये 98 में ही दिया था हमने रिप्रेजेंटेशन, P1 पेज नंबर 15 में माय लॉर्ड। ये निवेदन है कि मेरे पति स्वर्गीय सुयंसु दिमाग सुयंसु को अधीनस्थ भवन इंकलाब कमरा कॉलोनी में कार्यरत थे, जिनका बीमारी के कारण सुयंसु को निधन हो गया। आश्रित रोजगार दिलाए जाने की प्रार्थना अंतर्गत आवेदित श्रीमती तिलकवती कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 15 माय लॉर्ड, एनेक्जर P1 फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन माय लॉर्ड। 15 पेज नंबर 15 माय लॉर्ड। ये कब का है? 98 का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है माय लॉर्ड। 98। फिर आफ्टर माय लॉर्ड मतलब एग्जिट P2 पेज नंबर 26 में हमारा क्लेम रेफर किया गया था एज पर कंसिडरेशन के लिए, पेज नंबर 26 99 में हुआ था रेफर माइनर। तो ये आपने कहा कि कोई पुत्र नहीं है, मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, पुत्र भी नहीं है, तो मेरी बेटियां हैं, उनके उनके पति को दिया जाए। जी। ये 9.3.3 में कैसे आप, जब तक आप अवेलेबल हैं आप चूज कर सकते हैं क्या? यस माय लॉर्ड। ये अगर वो फिट
Yes, जब डायरेक्ट डिपेंडेंस अवेलेबल ना हो यानी एग्जिस्टेंस में ना हो बट माय लॉर्ड इसमें जो लास्ट जो तब इनडायरेक्ट रिलेशंस पे जाएंगे, डिपेंडेंस पे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पहले से ही बोल रहे थे कि डायरेक्ट डिपेंडेंट सन इन लॉ भी डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं, ये हमने रेगुलर लगाए हुए हैं डॉक्यूमेंट में। आपके बोलने से नहीं होगा, पॉलिसी से होगा। पॉलिसी में भी मतलब है, मतलब पॉलिसी में यह है कि अगर डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है, उपलब्ध है ही नहीं, तब ठीक है। इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, चलिए लिखिए। माय लॉर्ड मैं सबमिशन इज मॉनेटरी कंपनसेशन में भी गिवन माय लॉर्ड। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन तो आपने डिनाई कर दिया है। नो लॉर्डशिप, अब बाद में हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन के साथ। कब लिखा है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दे सकते हैं हमको मिस्टर नायर? My lord, that I'll have to seek because that is given up till the age of 60 years of the lady, my lord. Of the 60 years? 60 years, she is entitled to get monetary compensation. वो कहाँ पर? Where is that? My lord, that is there, my lord. So probably the page 67, your lordship. The top line. You are more than 60%, 60 years. She is more than 60 years, my lord. नो लॉर्डशिप, अभी इनका एज जो है 98 में she was 44. नो लॉर्डशिप 2014 में 58 है लॉर्डशिप। सर आपके डॉक्यूमेंट एस 58 है सर 2014 में 58 है इसमें लिखा है। मोर देन 60। 45 एज था उस टाइम पे जिस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी। ये उस वक्त आपने वो अपना गिव अप कर दिया, राइट? नो लॉर्ड 45 के बाद नहीं ले सकते ना। तो आपने कब फिर मांगा उसको? ये माय लॉर्ड 60 के पहले मांगा क्या? 60 की एज होने माय लॉर्ड इसमें लिखा है इन केस ऑफ फीमेल डिपेंडेंट एबव 45 ईयर एज विल बी एंटाइटल ओनली मॉनेटरी कंपनसेशन। हम 45 प्लस थे उस टाइम पे। That is also the affidavit which is given by the petitioner, if lordship see at page 18. She shows her age to be 44 years, my lord. petitioner नंबर 2 ये जो 44 ईयर्स है। नहीं, आपने कॉम्पनसेशन पहले मना किया 98 में, फिर उसके बाद कब मांगा आपने? उसके बाद माय लॉर्ड ये है ना एनेक्जर, वो लिखित में बताइए कहाँ है? माय लॉर्ड पेज 59 पेज नंबर 61। यस। रोजगार अथवा मॉनेटरी कंपनसेशन प्राप्त करने हेतु अपील। ये नागपुर में की थी अपील जब इन्होंने हमको P10 का जो P7 का जो ऑर्डर दिया था कि आप हायर अथॉरिटी से संपर्क करें, तो हमने ये 2009 को। इसमें कहाँ कहाँ है आपको चाहिए बताइए? इसमें मैं लिखा हूँ माय लॉर्ड। लास्ट में लिखा है मतलब प्रार्थना में अथवा एक और अथवा दो वेतन समझौते कंपनी के प्रावधानों से पति की मृत्यु तिथि के 1 माह से मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए। आशा है कि अपील के लिए निर्णय अभिकर्ता से अवगत कराएं। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाए, इसका क्या हुआ मिस्टर नायक?
My lord, I don't think, my lord, any action was taken properly because earlier it was rejected and a refusal. So, You can seek instruction on this. my lord, I'll seek instructions. my lord. We'll hold that 9.33, 9.3.3. He is not eligible. We'll do that and then we'll send it. My Send lord. for- My lord. So we hear that this petition has been filed by two petitioners. By petition number 1 and 2, who are the widow and son-in-law of the deceased employee of the Western Coalfields Limited, Kanan area, Indwara, who died in harness. While serving, he died. My lord, he expired on 1990. my lord, 3/7/98. While in service. While in service, my lord. Died in harness on 3/7/98. 3798. Claiming the following reliefs. The court. Next one. The learned counsel for rival parties are heard. Next one. It is not disputed at the bar that by P1, an application for seeking compassionate appointment, an application by the petitioner number 1, widow of the deceased employee, was filed for seeking compassionate appointment for her son-in-law, within bracket petitioner number 2, by P1, comma, after declining the offer made by the employer of granting her compassionate appointment. Next one. It is also not disputed that the aforesaid claim of the son-in-law petitioner number 2 has been declined on the annual of clause 9.3.3 of the Social Security. No. Chapter of Social Security, my lord. On the compassionate appointment, policy for compassionate appointment prevailing under the Western Coalfields Limited White P11, which provides thus. Quote continues. Next one. A bare perusal of the aforesaid clause, it is luminous that the principal claim over the benefit of compassionate appointment is of the direct dependents, which are defined as wife, comma, husband, comma, unmarried daughter, comma, son, and legally adopted son. Full stop. Next subparagraph. It is only when none of these direct dependents are available, within bracket, not in existence, bracket closed, then and only then the indirect dependents, that is brother, widowed daughter, stroke, widowed daughter-in-law or son-in-law, dependent on the deceased employee, may be considered to be direct dependents. Next para. It is not disputed by either of the parties that at the time when the claim for compassionate appointment was made by P1 in 1998, the wife and daughter were existing, but had given up their claim in favor of the son-in-law, petition number 2.
Next up, the terminology used in clause 9.3.3 reveals that a son-in-law who is an indirect dependent can stake his claim for compassionate appointment only when the direct dependents are not available. Full stop. Merely because the direct dependents are available and give up their claim cannot bestow right upon the indirect dependents to stake their claim for compassionate appointment. Next, in view of the above, the principal ground of challenge falls. Principal ground of challenge herein falls. Next, however, at this juncture, the learned counsel for petitioner submits by referring to P. T9, my lord, letter dated 10/7/2009, my lord, page 61. 61. P9. Dated 10/7/2009, P9, that that a request was also made to the employer by the petitioner number 1. That in case the compassionate appointment cannot be given to the son-in-law, then monetary compensation under the policy as due within bracket, which had earlier been declined by the widow, bracket close, be extended. Next. The Anup Nair, who appears for WCL, is directed to seek instructions on the aforesaid piece on P9 list in the first week of March. Oh. Morning stuff.
सर एक रिक्वेस्ट थी 44 पे था ये सर बाहर से आती हूँ मैं हरदा से आती हूँ लेट हो गई थी हम्म 44 पे एक मतलब लगी WP 44 पे लगी है आपकी? जी सर अच्छा ठीक, लाइए। अभी आप तैयार हैं? आइए मतलब डिसाइड होना है तो एक अब दस्तावेज अभी पे लेना और एक वो चेंज द वकील का उसमें आपत्ति पेश की है आपके अगेंस्ट कौन है? अगेंस्ट तो कोई भी नहीं वो आए नहीं वकील साहब आए नहीं रहे हमने पेश करे थे आपत्ति लिखित में आपत्ति हमने उनको मना भी कर दिए थे तब भी आए थे वो पहले भी हम भी थे हरिशंकर, हाँ बताइए। फिर इसमें एक आई है बदलने के संबंध में आवेदन पत्र 15373/22 15, हाँ हाँ, और एक है 12886 दस्तावेज अभिलेख पर लेने वाले नहीं बदलना मतलब किसको बदलना है? और बदलने उन्होंने कर लिए थे दूसरा वकील वो वापिस हमें को मतलब करना चाहते हैं तो इसके लिए शपथ पत्र भी पेश कर दी श्रीमान उनका और वो भी दिए तो आप इस आईए को प्रेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? सर पहले आइए डिसाइड हो जाती तो फिर बहस कर देती अब भैया आज मैं हाँ हाँ, तो ये अधिवक्ता चेंज होना है। अधिवक्ता तो चेंज मतलब करने का आप पुराने पुराने अधिवक्ता हैं? आप पुराने अधिवक्ता हैं। तो ये नए अधिवक्ता कौन है? सर पता नहीं कौन है वो मिस्टर रवीन सिंह ठाकुर, नहीं ये हम ही है सर ये आप हैं? पुराने अधिवक्ता ही हैं हम ये चेंज ऑफ काउंसिल का कौन सा आवेदन है? BS शर्मा है BS शर्मा जी है कोई पहले हाँ? 3568 2020 का 20 का 3568 अच्छा ये, ओके, इसमें लिखिए दैट IA 3568 of 20 was filed for change of counsel, but the said IA is sought to be withdrawn by a subsequent IA 15373 of 22. Next para. Next para. Since both the IAs are supported by an affidavit of the petitioner himself, IA 3568 of 20 stands dismissed as withdrawn, and IA so and so also stands disposed of. और बताइए एक 12886 आइए नंबर डॉक्यूमेंट्स, जी ठीक है, उसको रिकॉर्ड पे ले लेंगे। बाकी बताइए क्या है केस? सर अब बीच में मैं तैयारी करके आई नहीं थी मैं फिर किसी के लिए आई थी अब वैसे इसमें डिमोशन कर दिया गया था और अब हम बरी हो गए उसमें केस में हमको मतलब बाबू की चपरासी बना दिया गया था फिर मैं पूरी तरह से तैयारी करके आने को पनिशमेंट का ऑर्डर है ये तो, ये आपका इनका है हाँ, आपको रिवर्ट किया है, मगर ये रिवर्जन ऑर्डर आपने चैलेंज नहीं किया इसमें। रिलीफ क्लॉज में देखिए, इसमें चैलेंज करना पड़ेगा आपको। जी सर इसमें अपील पेश नहीं करी आपने? अपील पेश करिए सर कहाँ? कमिश्नर क्या करी थी
क्या हुआ? सर वो अभी मेरे को पता नहीं है कि हमने देखा नहीं उसको, मेरे सिर पे आईए के लिए आई थी, इसलिए मैंने मतलब उसको अच्छे से मतलब करके नहीं आई। The present petition assails the order of reversion asked by way of penalty on 6/9/16 P1. Next para. However, it is noticed from the prayer clause that the said penalty order has not been challenged. Next petitioner, as prayed for, is given liberty to file appropriate application. List after 2 weeks. Application लगाइए जी सर। amendment. My lord, एक रिक्वेस्ट थी, आइटम नंबर 42 में इसको विड्रॉ करना था, इसकी आई फाइल है, विड्रॉ करना। आई नंबर 42 जी कंटेम्प्ट। आप इसमें काउंसिल हैं? सर सीनियर है, इसमें हमने आई फाइल की हुई है 29 नहीं, आपका वकालतनामा है? तो फिर जिनका है उनको बुलाइए अगर विड्रॉ करना है तो। यस मगर आइटम नंबर 17 ना, ये इसमें अभी रिप्लाई नहीं आई है। आइटम नंबर 17 2019 की पिटीशन है मेरे। 17 पहुंच गए हैं क्या हम लोग? 16 17 नहीं, अभी पहुंचे कहाँ तक? रिक्वेस्ट करो सर। अभी पास ओवर लेना। 16 तक तो पहुंच गए हैं, आता होगा आपका। Lordship seeking permission to file an application. हाँ ये पास ओवर मैटर सी नंबर 6। It is a matter of appointment of Kotwar. Cancellation of फुल बेंच का। यस Yes, is Milad. That one Babu Rao Nagle. He was Milad Kotwar in the village Kheda block Multai district Batul. He died Milad on 10/1/2009. After his death Milad, he has two sons. Number one Parasram Kotwar and number two Umesh Nagle. On 27/8/2010 Milad Parasram Nagle died, leaving behind Usha Nagle wife and Rosni his daughter. And other side Milad Umesh Nagle brother. The post was vacant Milad, then fresh process of selection for post of Kotwar was started. Applications were invited. There were 3 applications Milad. Usha Bai, Umesh and Kumari Rosni. After Milad resolution of Gram Sabha and after all formalities Milad, 2 applications were rejected. Usha and Rosni. After rejection of 2 applications Milad, Usha Bai and Rosni, only one candidate was found fit, that is petitioner Umesh Nagle. He was appointed by Nagar P1. Yes. The relevant portion of deciding objection of Usha Bai, private respondent number 5 is Nagar P1 page 15. इसमें मिला फाइंडिंग ये आई है कि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए आवेदिका उषा बाई के द्वारा एक आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक उमेश चिचखेड़ा में निवास नहीं करता है तथा उसका ग्राम चिचखेड़ा की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। आवेदन पत्र निरस्त किया जावे। आवेदिका ने अपने इसी आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि वह स्वयं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है तथा उसके द्वारा ग्राम कोटवार के पद पर अपनी पुत्री रोशनी पिता परशुराम को नियुक्त किए जाने का निवेदन किया है। प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक उमेश से जवाब लिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह ग्राम चिखखेड़ा का स्थायी निवासी है। पूर्व में पिताजी बाबू राव ग्राम कोटवार कार्य करते थे। उनकी मृत्यु के बाद बड़े भाई श्री परशुराम को ग्राम कोटवार नियुक्त किया गया था, जिनकी बीमारी के दौरान 27/8/10 को मृत्यु हो गई है। आवेदक पिछले 5-6 वर्ष पूर्व में ग्राम में काम न मिलने के कारण ग्राम पीथमपुर कमाने चला गया था तथा अब वह फिर से ग्राम चिचखेड़ा में आ गया है तथा परिवार सहित निवास करता है। पूर्व मतदाता सूची में उनके नाम थे
चुनाव परिचय पत्र भी उनके नाम से जारी हुआ है तथा पंचायत चुनाव के दौरान उनका नाम हटाया गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि यदि कोटवार के पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह ग्राम में निवास को कर कोटवार के पद का कार्य करेगा। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का प्राप्त आवेदन पत्र पंचायत प्रस्ताव का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया गया तथा ग्राम चिचखेड़ा में ग्राम कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु 3 निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उषा पत्नी परशुराम जाति मेहरा निवासी ग्राम सुवर्णसो, उमेश बल्द बाबूराव जाति मेहरा, कुमारी रोशनी पिता परशुराम जाति मेहरा। इन आवेदन पत्रों के संबंध में ग्राम सभा ग्राम चिचखेड़ा का ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति के संबंध में अभिमत लिया गया। ग्राम सभा द्वारा आवेदन पत्रों पर विचार कर सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर आवेदक उमेश आत्मज बाबूराव को ग्राम चिचखेड़ा में ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा ग्राम सभा ग्राम कोटवार के पद पर उमेश को नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। आवेदिका उषाबाई स्वयं ग्राम चिचखेड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है। उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आवेदिका कुमारी रोशनी उम्र वर्तमान समय में 18 वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में आवेदिका उषाबाई तथा कुमारी रोशनी को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ग्राम सभा ग्राम चिचखेड़ा द्वारा भी उनके नाम ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति के संबंध में पारित प्रस्ताव नहीं किया गया है। आवेदक उमेश 6ठी तक पढ़ा है तथा पुलिस थाना मुल्ताई से प्राप्त आचरण प्रमाण पत्र के अनुसार उसके विरुद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, पंजीबद्ध तथा सजायाफ्ता नहीं है। ग्राम सभा द्वारा इनके नाम पर ग्राम कोटवार नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आवेदक उमेश ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार प्रतीत होता है अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 230 के अंतर्गत आवेदक उमेश बल्द बाबूराव जाति मेहरा निवासी ग्राम चिचखेड़ा के ग्राम कोटवार पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा शेष आवेदन पत्र खारिज किए जाते हैं। नियुक्ति आदेश पृथक से जारी हो। दिस इज माई अपॉइंटमेंट। देयर आफ्टर माई अपॉइंटमेंट ऑर्डर was challenged before the SDO Milord. Annex P2 13/4/2011 Milord SDO cancelled my appointment. Relevant page 21 21 यस। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भू राजस्व संहिता की धारा 230 के अनुसार मृतक कोटवार की विधवा द्वारा आवेदिका उषाबाई का आवेदन पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होने का आधार लेकर आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया गया है। जबकि आवेदिका उषाबाई ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह ग्राम कोटवार के पद पर कार्य करना चाहती है। जहां तक उषाबाई बेवा परशुराम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होने का प्रश्न है, यदि उषाबाई की नियुक्ति ग्राम कोटवार के पद पर की जाती है तो उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद ही ग्राम कोटवार के पद पर कार्य करने की उपस्थिति दी जाएगी। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ होने का आधार लेकर आवेदन निरस्त कर दिया गया है एवं परशुराम के भाई उमेश की अस्थायी कोटवार के पद पर कर दी गई है, जबकि ग्राम कोटवार के पद पर विधवा पत्नी को प्राथमिकता देना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित करने की त्रुटि की है, लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 27/12/10 निरस्त किया जाता है एवं इस प्रकरण के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदिका उषाबाई बेवा परशुराम को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त हेतु नहीं, ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है ये विधवा है। परशुराम की विधवा है। आवेदक पिटिशनर उमेश की दादी है। परशुराम पहले क्या थे? परशुराम ही कोटवार था। फर्स्ट इज मिलाट बाबूराम कोटवार था 2009 में। और आप कौन है उनके परशुराम के? भाई भाई दोनों एक ही फैमिली से हैं। तो रूल्स में क्या कहते हैं? रूल्स क्या है? रूल्स है मिलाट की रूल क्या है? कोटवार की फैमिली को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित कहाँ है रूल बताइए? हम भी हैं, ये भी है। नहीं, रूल बताइए। मिलाट 230 ऑफ MPLRC मिलाट। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सेक्शन 230 इसमें वो कमेंट्री वाला निकालिए। लोकल एक्ट्स 230 कितना है? 230 कोटवार से संबंधित। हाँ, यस। अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार एंड देयर ड्यूटी। For each village or group of village, there shall be appointed in accordance with law made under section 258 or one or more kotwar for the performance of such duty as may be prescribed.
provided that in the Madhya Pradesh region, the duty of kotwar under this section shall be performed by the police chowkidar, who shall, on the coming into force of this code, be deemed to be kotwar under this section and be subject to all respect to the control of revenue officer. Every person at the coming into force of this code hold the post of a village watchman in the Bhopal or Srinagar region. और इसमें नहीं लिखा ना? उसमें रूल्स कहाँ है? रूल बताइए, इसमें रूल्स बने हैं ना, 230 रेड विद 258 रूल्स बने हैं. After order of SDO Millard, cancelling my appointment, petitioner moved before the commissioner. Narmadapuram, Hoshangabad. The order is annexed P4. Okay. The relevant page 24. Finding is Millard in para 3. विषय मिलट कि मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया, पेज 24 में. उपरोक्त अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख में उत्तरवादी श्रीमती उषा नागले ने तहसीलदार के समक्ष विषयांकित ग्राम कोटवार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 16/9/10 को प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा अपने पति स्वर्गीय परशुराम की मृत्यु उपरांत आवेदिका के पास परिवार का भरण पोषण का मुख्य इसमें रूल्स निकालो भाई, 230 के रूल्स. आवेदिका के परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति दयनीय होने के तथ्य भी प्रकाश में लाते हुए विषयांकित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, परंतु आवेदिका श्रीमती उषा द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह तथ्य उजागर नहीं किए गए कि पूर्व से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 16/4/2003 से पदस्थ होकर कार्यरत है. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जाना योग्य होगा कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदिका उषाबाई द्वारा वास्तविक तथ्य, जिसमें पूर्व से स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होना छुपाया गया है और उसके मूल विभाग से किसी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, ऐसे भी तथ्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है. इसी अनुक्रम में उसके द्वारा दिनांक 15/11/10 को तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी पुत्री कुमारी रोशनी को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त करने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया है. उल्लेख करते हुए विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभात पट्टन ने 27/10/2023 के अंतर्गत आवेदक श्री उमेश को विषयांतरित ग्राम कोटवार के पद पर पदस्थ किया गया है. उसी तारतम्य में श्रीमती उषा मेहरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुल्ताई के समक्ष अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परंतु फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उनके पदस्थ रहने के तथ्य को उजागर आवेदक दिनांक 13/4/11 को विवादित आदेश पारित किया है, परंतु मैं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 13/4/11 में अवधारित यह निष्कर्ष की विचारण न्यायालय का आदेश 27/12/10 विधि सम्मत नहीं है, इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ. साथ ही आवेदिका उषाबाई पत्नी परशुराम को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता किन आधारों पर दी जावे, इस मुद्दे को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना विधि के सारभूत आधारों को लेख नहीं किया है. अतः मैं अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश 13/4/11 को विधि सम्मत नहीं पाता हूं. अतः उपर्युक्त उल्लेखित वस्तुस्थिति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 13/4/11 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मान्य की जाती है. उभय पक्ष सूचित हैं. एंड P7 is her appointment order as an Anganwadi worker. Then she was not eligible to appoint until and unless she resigned from the post of Anganwadi worker. एक नौकरी अगर उसके पास है तो फिर वो दूसरी नौकरी में तथ्य छुपा करके वो अप्लाई करेंगे. अब ये कह रहे हैं कि अब उनकी पुश्तैनी नौकरी हो गई कोटवार की, जबकि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट बोथ आर मिलट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कोटवार. अनएम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए. नियम कहाँ है, नियम बताइए. नियम 4(2) का रेफरेंस है ना इसमें, कहाँ है? सेक्शन 230 में नियम बने हैं हाउ टू अपॉइंटमेंट ऑफ कोटवार के. That rules today, that rules are not available with me. My senior was likely to argue the matter.
Actually, my senior was likely to argue the matter, and rules are not available with me today, sir. And in that rules, rule 4 sub rule 2 में ये है कि the preference should be given to the widow, हाँ and that is why I am claiming that. And so far as the impugned order is concerned, that is which has been passed by the SDO. SDO has just remanded the case. so it is the claim, it is a contest between widow and brother. Brother. तो 4-2 रूल पढ़िए ना. और विडो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट आंगनबाड़ी में है, विडो अनएम्प्लॉयड. हाँ विडो मिलट इज ऑलरेडी इन जॉब, गवर्नमेंट जॉब ऑन द पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर. And other side brother having no job, and he has burden of mother and all family. तो रूल्स में ब्रदर के बारे में क्या है भाई? वो रूल तो पढ़िए ना. Nobody has brought the rule. Sir, actually, just as my senior gave me the file, sir, I have read over the file, and that is why I came to conclusion that the rule is necessary to argue that. अब रूल मैंने ढूंढने सर अभी मिल नहीं पाए थे. Entire case is based on that particular rule, rule 4 sub rule 2. And he is acting. ये तो कुछ केसेस दिए हैं. जो 2 वॉल्यूम्स में थी ना लोकल एक्ट्स में, एमपी लॉ 2 वॉल्यूम्स में थी, उसमें एक में रूल्स होंगे. कोटवा रूल्स. दुबे जी रूल तो पढ़िए. रूल ऑफ स्टेट काउंसिल बिहार है. पहला से नहीं, मोटी वाली कमेंट्री वाली में. अभी हमारे पास कमेंट्री वाली में इसमें है ना, इसमें कमेंट्री नहीं है. और कमेंट्री में भी नहीं, मैं देख लिया. 4-2 क्या कहता है? ग्राम सभा ने किसका वो किया था रिकमेंडेशन? पिटिशनर उमेश का. इनका. आपका. क्वालिफिकेशन क्या है? मिडिल स्कूल मिला 6वीं. हिंदी ओपिनियन अपॉइंटिंग. एज क्या है आपकी? In 2013, he was aged about 35. At the time of selection, near about 32. No, it says other things being equal, preference will be given to near relative.
I am the widow of the deceased employee. No, if other things are equal, then So if the other things are concerned, sir, so with respect to that particular thing is concerned, sir, so far as the present petitioner is concerned, he himself is admitting that he is not resident of permanent village. near relative कौन कहलाएगा? Near relative to being a wife, so firstly close relative to my and only thereafter my brother, मतलब my brother-in-law. ये हमारे देवर हैं. Being a wife हमने अप्लाई किया, इन्होंने अप्लाई किया. And its lordship will, sir, kindly see page number 15, very last line. तो आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है? आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा? नहीं, रिजेक्ट तो रेस्पोंडेंट नंबर 5 का हुआ है। अच्छा, अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपका रिजेक्ट क्यों किया? हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिलट एसडीओ के ऑर्डर पे साबित कर दिया और प्राथमिकता देने की बात कही गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है मिलट इन पैरा पेज 31 Your widow should get preference, irrespective of the fact that she is appointed already. And even the petitioner is not resident of that particular village. He is admitting that fact. No. तहसीलदार का आप आदेश देखेंगे सर, पेज नंबर 15 में kindly be seen for a moment. Page number 15. So what is wrong with the order? What is wrong with the order of the board of revenue? Lord, once the respondent number 5 is holding the post of Anganwadi worker in the government department. She'll leave it. ऐसा कोई rules में There is no NOC. disqualification नहीं है. नहीं, कमिश्नर ने वही तो कहा कि उसकी एनओसी नहीं है कि विभाग की विभाग से एनओसी लेकर के आए। नहीं, आप किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं होंगे, ऐसा कोई प्री रेक्विजिट नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट। रूल्स में बताइए, रूल्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। कमिश्नर तो उसमें कमिश्नर की फाइंडिंग देखें मिलाट के पेज 24 में इसमें कहा उषा द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह तथ्य उजागर नहीं किया कि वो पूर्व से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 2003 से कार्यरत है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता तो आवेदन में डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या? डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या? तो देन इट विल अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। गवर्नमेंट आंगनबाड़ी वर्कर इज गवर्नमेंट। स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है? शी इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है? इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एज पर योर रिप्लाई? State has final reply they supporting the order of SDO and board and opposing the order of Tahsildar and Commissioner. They are supporting the order of the board. Tahsildar and Commissioner has passed order in my favor, Milord, and SDO and Board of Revenue passed order in favor of respondent number 5. Now, state has to take decision that whether one employee can hold another post. Anganwadi can hold the another post of Kotwar. So she'll resign. If she does not resign, then she cannot join. On the date of application, Milord, she had not resigned. ऐसा रिक्वायर्ड है रिजाइन करना, ये बताइए, ऐसा रिक्वायरमेंट कहाँ है? तो रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है दैट यू द कैंडिडेट शुड बी नॉट एम्प्लॉयड और कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड, ऐसा कहीं नहीं। और कुछ एनीथिंग एल्स मिस्टर दुबे? जी सर, बस क्या ग्राम सभा का प्रस्ताव भी हमारे लिए था, उनके लिए तो था ही नहीं। ग्राम सभा ने तो उनके लिए प्रस्ताव नहीं दिया है। ग्राम सभा का प्रस्ताव हमारे फेवर में, रेजोल्यूशन हमारे पक्ष में पास किया है ग्राम सभा ने। That is also important factor for appointment of Court-20। ग्राम सभा आपके पक्ष में रिकमेंड किया? हाँ, रिकमेंड हमारे फेवर में किया और पुलिस वेरिफिकेशन भी हमारा ही हुआ। Resolution of Gram Sabha, my police verification was done. Then I was. तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप एम्प्लॉयड हैं? नहीं, हाँ, हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं हुआ, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ।
एप्लीकेशन इनका कैंसिल, इनका रिजेक्ट। आप अपॉइंट हो गए, हम अपॉइंट हो गए, उसके बाद कैंसिल किया? उसके बाद एसडीओ के यहाँ अपील गई, अपील में हमारा कैंसिल हुआ। तो ये इसमें स्टे है क्या? हाँ, इस पर। और एडीओ साहब ने सिर्फ रिमांड किया है सर केस, ये कहते हुए कि दोनों पक्षों को सुना जाए उसके बाद फिर। कहाँ पर है? ये सर पेज नंबर 21 अगर आप देखेंगे एसडीओ ने भी वही कहा, लास्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी वही कहा, रिमांड किया कि ये लिखा हुआ पारित आदेश 27/12/2010 निरस्त किया जाता है। 13/4 का ऑर्डर कहाँ है? 13/4 सर एसडीओ का? जी सर 13/4 पेज नंबर 13/4/2011 P2। 21 में रेलिवेंट पोर्शन है सर, आखिरी से चौथी लाइन। पत्नी पेज 19 से 21 का। इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्थिर रखा है। हाँ, इसको बोर्ड ऑफ इसको कंफर्म किया है। हाँ, तो इसमें बताइए व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? एसडीओ का आदेश फिर हम कमिश्नर के यहाँ गए मिनट, कमिश्नर ने फाइंडिंग दिया कि एसडीओ ने गलत कर दिया, क्योंकि वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा वाज टू बी कंसीडर्ड, पैरा 3 इज रेलिवेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। हम उसको पीछे पढ़ दे रहे हैं मिनट, रेलिवेंट है कि इट स्टार्ट मिनट मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख में उत्तरवादी भाई विडो या ब्रदर, दोनों में से ऑलराइट, और एम्प्लॉयड जो विडो या ब्रदर कौन सा क्लोज रिलेटिव है, नियर रिलेटिव? देखो ब्लड ब्लड रिलेशनशिप तो ब्रदर से है, वाइफ से नहीं है। बट और वाइफ एक प्लस पॉइंट में भी है कि उसको 10,000 की नौकरी भी है उसके पास में, हमारे पास तो भी नहीं है। और कोटवार का पोस्ट ये है मिलाट की कोटवार को रात में भी, शमशान घाट में भी, सब जगह ड्यूटी करना होता है। वाइफ को सूटेबल नहीं होगा, वुमन को सूटेबल पोस्ट नहीं है। वुमेन आजकल फाइटर पायलट बन रही हैं, आप कोटवार की बात कर रहे हैं? कोटवार में तो कहते हैं कि डेड बॉडी को भी उठाना पड़ जाता है, तो फिर गाँव की डेड बॉडी भी अगर कोई लावारिस पड़ी तो उसको भी उठाना है। Your this argument is tainted with gender bias. नेचर वाइज, वर्क नेचर। क्या उसमें कोई दौड़ना भागना पड़ता है? नहीं, दौड़ना भागना तो दोनों बराबर करेंगे, लेकिन अगर डेड बॉडी को कहीं दफनाना है शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, तो क्यों नहीं कर पाएंगे? महिला होंगी तो क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो कहीं फाइंडिंग है ही नहीं, किसी भी ऑर्डर में नहीं है ऐसा। ये तो आप ही उठा रहे हैं। और कुछ दुबे जी? जी सर, बस लिखिए इसमें, this petition under article so and so is filed assailing the order of the board of final order of the board of revenue dated so and so, passed in so and so, whereby while setting aside the order of the commissioner Narmadapuram dated 21/2/12, the order of the SDO Multai district Betul 13/4/11 has been confirmed. Next paragraph. By the order dated 13/4/11, P4, P2. Yes. Page number 21. The SDO accepting the appeal of the respondent number 5 herein. Set aside the order dated 13/4/11. Right, 13/4/11. 27/12/2010.
13.4 reduce. 13.411 P2. No, sorry. By the order dated 13.411, the SDO allowing the appeal of the respondent number 5 set aside the order dated 27/12/10 of Naib Tehsildar. Oh, Nayab Tehsildar. Nayab Tehsildar. Naib Tehsildar. P1. That is P1. Sir. P1. Comma. Next up, by the order dated, by the original order dated 27/12/10, the Naib Tehsildar, among the competing claims of the respondent number 5 and the petitioner for appointment to the post of Kotwar, Gram Chichkheda, Ji. Tehsil Multai, District Baitul, accepted the application of the petitioner. और अपॉइंटमेंट कब हुआ आपका? 2010 P1 से अपॉइंटमेंट। नियुक्ति आदेश 28/12/2010 को उसी ऑर्डर शीट में आ गए। Next up, consequent upon the order of Naib Tehsildar dated so and so, the petitioner had been appointed as Kotwar by P2 28/12/10. Sir. 13/4/11. पेज नंबर 17 सर ऑर्डर शीट में आया है। The next page is 18 is the order. जी सर it is the appointment order. Next para. After hearing the learned counsel for the rival parties, it is obvious that the contest between the respondent number 5 and the petitioner was on two issues, which are as follows. Number 1, whether the respondent number 5 falls within the category of near relative expression, within the expression near relative found in Rule 4.2 of the rules regarding appointment, punishment, and removal of Kotwar and their duties, framed under section 230, read with 245 of the MP Land Revenue Code. Number 2, as to whether the fact of the respondent number 5 serving as आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हाँ जी, आंगनवाड़ी वर्कर। कहाँ पे? उसी जगह, सेम ग्राम पंचायत, village, so and so, same village, is disabled
or illegible or not eligible to be appointed as Kotwal. Next paragraph. For the ready reference and convenience, relevant rule 4. Three and 4 are reproduced below for ready reference and convenience. 3, 4, and 5. Next paragraph. A bare perusal of Rule 4 reveals that on the arising of a vacancy, on the post of Kotwar, and after receiving the resolution duly passed by the Gram Sabha of the area concerned, the competent authority shall appoint an eligible person on the post of Kotwar, unless that person does not fulfill the qualifications prescribed in Rule 2. वो Rule 2 भी कर देना ऊपर reproduce. Full stop. The said provision further provides that if all the other attributes of the candidates are found to be equal, then preference would be given to near relative of the former Kotwar. Next full paragraph. In the instant case, the respondent number 5 is the widow of the former Kotwar, while the petitioner is the brother. Full stop. It is also not disputed that the Gram Sabha had passed a resolution for appointing the respondent number 5. No, in favor of petitioner. In favor of petitioner. Yes. For appointment as Kotwar. The SDO, the Commissioner and the Board of Revenue have decided the cases after adjudicating the aforesaid 2 issues and have held, and the Board of Revenue has ultimately held that that the mere fact that the respondent number 5 is employed cannot be a dissuading factor to appoint the said respondent number 5 as Kotwar, since there is no such disqualification prescribed in the rules. The authorities have also held that the widow of the respondent number 5, who is the widow of the former Kotwar, is a closer relative as compared to the petitioner, who is the brother of the former Kotwar. Commissioner has different finding. Commissioner has said that no, widow cannot be given because she is not eligible because of holding the post of Anganwadi worker. Petitioner is a brother who is entitled eligible. Next one. Next para. The question which falls for consideration is as to whether the employment of the petitioner, of the respondent number 5, at the time of the selection and appointment for the post of Kotwar can be a dissuading factor for her appointment as Kotwar. Her employment as Anganwadi Carrier.
Full stop. In the considered opinion of this court, since the disqualifications are exhaustively provided in Rule 2, which are that the person should be of a good character, having no antecedents, and should be mentally and physically fit to perform the duties, and should be of the age of 21 or above, comma, no other disqualification can be treated to prevent the candidature from maturing into an appointment. Full stop. No discretion is left to the competent authority, the selecting agency, to disqualify a candidate merely because the candidate is in employment at the time of applying for the post of Court-20. Full stop. As such, the first objection of the petitioner falls. Next para. As regards whether the petitioner or the respondent number 5 are closer relatives of the former Court-20, the scheme of the rules provides that if other things are equal, preference would be given to a near relative. Full stop. As such, the facts reveal that the other factors, the other attributes of the petitioner as well as the respondent number 5 were equal, and therefore the authorities had to decide as to whether a brother or the widow has to be given preference as a near relative. ये ब्रदर क्या करते हैं? ब्रदर कुछ नहीं करते, हाँ, कोटवार में काम कर रहे हैं अभी। नहीं, ब्रदर करते क्या है? नहीं, उसकी डेथ हो गई ना ब्रदर। नहीं नहीं, आप पहले क्या करते थे? मजदूरी करते थे, दूसरे वहां पर डिस्ट्रिक्ट में जाकर लेबरिंग का काम डिस्ट्रिक्ट करते थे हम लोग। अभी तो 2011 से 2010 से कोटवार के पद पे काम कर रहे हैं, 12 साल हो गए। इसमें पहले कमिश्नर कोर्ट से मिला स्टे हुआ था, उसके बाद हाई कोर्ट से भी स्टे हुआ था। एसडीओ ने अपॉइंटमेंट जब कैंसिल किए, उसके खिलाफ हम कमिश्नर के यहाँ से स्टे लिए, उसके बाद फाइनली हमारे फेवर में ऑर्डर हुआ, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमारे खिलाफ एक पारा जोड़ दीजिए that the objection as to whether the resolution of the Gram Sabha is to be given due importance also needs to be considered. Provisions of Rule 4 reveals that Gram Sabha by a resolution recommends a particular person or appointment as Kotwar. But whether the said person so recommended is eligible and whether has to be given preference or not has to be seen by the competent authority. And therefore the resolution of the Gram Sabha is a mere recommendation and not binding on the competent authority.
लास्ट में क्या है? In the considered opinion of this court, the widow may not be a blood relative of the former Kotwal, but by the very relationship which is developed by marital ties, he will have to be treated as a nearer relative than the brother for the purpose of Rule 4. Next para. At this juncture, the learned counsel of petitioner has also raised a contention which was though not considered by any of the authorities, but deserves to be considered by this court. It is submitted that the respondent number 5, being a woman, will not be able to discharge the functions of a kotwal. Full stop. To say the least, this argument is heard to be rejected as it suffers from gender bias. Next para. In view of the aforesaid analysis, this court has no manner of doubt that the order passed by the Board of Revenue deserves. Where is SDO's order? LG order is page number 21, sir. एसडी ऑर्डर पी 13/4/2011 page 90 does not deserve any interference, and the petition stands dismissed. Any interference in the limited supervisory and writ jurisdiction of this court, and therefore the petition stands dismissed. हाँ ठीक है, उसको ध्यान दो। और Chair number 7, P. Akash Chaudhary, Anup Nair. Lords, I'm praying that kindly this matter be listed tomorrow. We don't have to file an additional return and pleadings have been completed. क्या मैटर है? This is a matter wherein they have issued me a charge sheet. After when I filed a reply, my lord, it was considerable delay on their part. I submitted a representation that I don't want to contest it as far as my lord regular department inquiry is concerned. They may consider my reply and pass an appropriate order. The punishment order is passed, that is upheld in appeal. It's a matter of department inquiry. The minor punishment. Minor punishment. Stoppage of one increment with cumulative effect, but that has got cascading effect. No, without cumulative effect. Without. But that has got cascading effect, my lord, because I was due for my higher pay scale. At that interim period, that got delayed. I was due for 2009, it was paid to me in 2012. Are you still in service? Yes, I'm still in service. No, it's a minor punishment. One increment, non-cumulatively. And I'll try and satisfy a lot on that count also, my lord, if I am in a position to do so. I will take it up tomorrow, my lord, I'll address it because they don't want to file any additional return, my lord, then. No, Mr. Nair, any force in the petition? According to us. No, not according to you, but. No, I'll demonstrate, my lord. We will take it up tomorrow. I'll demonstrate. One of the minor most punishments. It's a minor most punishment, my lord. That's why charge sheet is running through at least 7 pages. And still minor most punishment. That is what I'm humbly submitting. Vagueness of charges. Does that mean the disciplinary authority was very disciplinary authority, that means was very lenient towards you? Well, I'll leave that to your lordship. 3-4 issues which I'll be raising. But we'll take it up tomorrow. I'll address it. Fine. Look, tomorrow never comes. Tomorrow always remains tomorrow. Since I was of the... we only have today in our hands. But since they were not filing, they took time to file additional. Is it admitted? It's not admitted. Not admitted. Then we'll admit it. But then I'll argue it today itself. In fact, they have sent us the instructions. We have already emailed the additional return, my lord. I'm just waiting it to be notarized, my lord. So additional return? Ji. Why?
My lord, draft has been prepared and sent for notarization that have not yet received, my lord. You file return. They filed the return. 4 weeks time for additional return. So we'll place it in the final hearing list of March. But then it would never reach, my lord. The submission would be. My No, lord, if it is there in the final hearing list of March, you can, whenever we find time, then will never reach, my lord. Final hearing list as such, my lord, because of his the number which is there, it may be posted at above 200 or something of that sort. It may be kept in motion hearing only, my lord. I'll just point out 3-4 issues, my lord, and I'll summarize them. Not on the merits, my lord, the procedural part of the punishment import. That's it. additional return as per the respondents is almost ready and shall be filed shortly. Let the same be done just after 3 weeks. Much obliged. Chair number 8, Sri Rahul Misra, R.K. Tiwari. Matter is pertaining to recovery, my lord. And petitioner is no more, my lord, and video is on Pertaining record. to Recovery of class 4 Recover. employment. And original petitioner is no more, my lord. Video is on record, my lord. Kindly appreciate my IA number, my 5828-2022, my lord. no, what is the recovery about? Recovery of my erroneous fixation of salary, my lord. Acha. Of your husband. Yes, my lord. So he had given some undertaking. No, my lord. He is on service, my lord. Hmm? At the time of recovery, he was in service, my lord. So when the benefit was given, which is now sought to be recovered, In reply, at that time undertaking was taken from you or not, your husband? my lord, there is no undertaking, my lord. What have they said in the reply? Written is on record, my lord. Not on record. No, what have they said? आपका क्या stand है? My lord, his stand is that petitioner is work charge establishment and he is not entitled the benefit of community pay scale, my lord. Only issue is that, my lord. This is contrary to judgment of Tejulal, my lord. The judgment of Tejulal found by under FX code, my lord. He is not entitled to Kramonati. Yes, my lord. He is not entitled to benefit of Kramonati, my lord. Para number 3 of his return. So Kramonati was granted by counting the contingency service. That was wrongly granted as per them. Page? Second last line. 26. 23. P6. 23. Yes. The last paragraph, Lordship, तदनुसार इस कार्यालय द्वारा सेवा पुस्तिका संयुक्त संचालक लोक कोष लेखा एवं पेंशन विभाग संभाग कार्यालय में संदर्भित पत्र द्वारा भेजी गई। तदनुसार संयुक्त संचालक लोक सेवा पेंशन संभाग विभाग आपत्ति उल्लेख करते हुए सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को वापस दी गई है। आपत्ति की गई है कि शासन की क्रमोन्नति योजना एवं समानमान योजना का लाभ शासन के सिविल सेवा कर्मचारियों नियमित स्थापना में नियुक्त को हुई है। मीनियल का पद आकस्मिकता निधि स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पद है। मीनियल को शासन की क्रमोन्नति एवं समानमान योजना का लाभ देय नहीं है। So, all right. So, when did you give this benefit wrongly? ये amendment application है कोई आपकी इसमें? Yes, my lord. Amendment application है, my lord. That was allowed? No, my lord. It's Pending? जी pending, my lord. इसी में my lord केस लगा है। क्योंकि my lord, after the death of the husband of the petitioner, my lord. No, if you want to amend the paragraphs, then you amend them first. जी, yes. All right. Amendment allowed. Carry out within 10 days. State is free to file additional return. Just after 6 weeks. Fix in the month of March, my lord. The case is already admitted, my lord. In year 2013, my lord. नहीं, अब आपने वो amendment किया है तो नहीं, amendment तो मान लो मैं 10 दिन में कर दूंगा, next month में नहीं, additional reply भी तो देंगे। Additional reply के मान लो Well, list in the first week of April. in the list of final hearing, my lord. No, if you want in the final hearing list. Yes, and case is already admitted, my lord. Admitted, I think. Case is already admitted. Yes. List in the final hearing, list of March
23 जी आइए ऑर्गेनाइज ये मार्च 23 की फाइनल हियरिंग में आएगा नहीं आपका बिकॉज फाइनली तो ऑलरेडी एडमिटेड है माइलॉर्ड। नो सिंगल बेंच इज नॉट फाइंडिंग टाइम फॉर फाइनल हियरिंग। जी 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 डिवीजन बेंच में तो कभी कभी आ जाता है फाइनल हियरिंग बट सिंगल बेंच में नहीं आता है, सो आई थिंक इट विल बी फेटल फॉर योर क्लाइंट। तो मैंने मोशन पे ही माइलॉर्ड रहेगा। हाँ तो मोशन में लगा दी, मोशन में कर दी। यस Chair number 30, My sincere apologies. Dr. Rashmi Pathak. The first round. yes yes no doesn't matter yeah. Well, in fact, my lord, that short rejoinder is required in this case, my lord. Well, initially, my lord, I was not here, but when I examined the counter, they have given the my lord procedure adopted for termination, my lord. Then I asked them to, my lord, to take, my lord, the copies of proceedings which were drawn by before the state government. Yes. Now I found, my lord, that the very, my lord, initiation of the, my lord, department proceedings, that itself is void ab initio. How is that void? My lord, the state government has to initiate, my lord. Charge sheet is to be issued by the state government. Yes. Now there are rules of procedure, my lord, under Article 166, rules of business. Now here, my lord, I find that the Under Secretary has done everything. Matter has never traveled, my lord, to the minister in charge and chief minister. So the punishment is it a punishment or termination? Punishment, termination. No, by way of punishment or you By way of punishment. after inquiry? After inquiry. And that is by in the name of the governor. That is Article 166 says that every order of the state government shall be expressed in the name of governor. Yes, yes. That is requirement. But when under the rules of business a proper note sheet is drawn and the exercise is undertaken, it's like this. The under secretary or secretary may initiate a note sheet. Yes. It will ultimately travel up to the Milord. If it is Milord, the decision is to be taken by the Milord minister in charge, then to the minister. There are three contingencies under the rules of business. One is minister in charge is empowered Milord to take decision. Secretaries are not empowered. Second is Milord the council of ministers. There are certain matters which will go to the council of ministers. Yes. Then third category Milord, certain matters can go to the chief minister. And when they approve it, my lord, then it will be, my lord, issued as an order of the state government and it will be authenticated by a secretary and it will be expressed in the name of governor. No, the order is, I think. It is only expressed in the name of governor as order of the state government. 3/9/2005. Where is this order? The punishment order. Punishment order. The appellate order is A2. That is, my lord, later. Later. What I am saying is this, my lord, there are three things. One, that at the stage of issue of show cause notice Yes. and charge sheet, the matter has never come to the minister in charge. So where is the charge sheet? My lord, charge sheet says, my lord, it is issued in the name of governor. That is all. So then the file has to be seen. Yes. The noting has to We be have, seen. my lord, taken, my lord, under the right of information and the copies. And then. So that ground has been taken. The second time, my lord, suppose, my lord, after the inquiry is held, then they have to take the state government has to take a decision whether punishment is to be imposed or inquiry officer's report is to be accepted. In this, my lord, inquiry officer, my lord, said no, it is not required. Then again, my lord, the same exercise. The secretary can propose, my lord, that this is the finding and therefore note sheet presses. The rules of business uses the word, my lord, pressing by the secretary. Then it will travel, my lord, again, my lord, to the minister in charge. And if the minister in charge approves, then, my lord, the secretary can issue an order in the name of governor. The third time, what happens, my lord, when I file appeal, then according to in my respective submission, my lord, under the rules, governor is the persona designator. Order itself is passed by the state government. Therefore, my lord, the appeal cannot be heard, my lord, and decided by the state government.
Now appellate order says राज्य शासन अपील निरस्त करती है. It specifically says, my lord, if your lordship sees राज्य शासन. So who has passed the penalty order? Penalty order is, my lord, in fact, according to me, my lord, the deputy secretary. But it's a very, my lord, interesting case in this case, my lord. It never happens that secretary will do everything. Only because he under the rules of business, he is empowered to say that I am entitled to authenticate an order in the name of governor. He cannot do everything. So have you raised this ground? That is what, my lord. That is why rejoinder, my lord. No, the ground has to be raised in the petition. Then I will amend, my lord. Oh. Yeah, exactly. नहीं. Because these, in regard to such functions, the governor does not exercise his personal discretion. That is one way. He moves on the advice of the whoever is the competent authority. The full bench of our high Full court. bench, yes. That's it. But I will sign below the other judgments. All right. Please. Learned Senior Counsel Shri Kishore Srivastava, along with Rashmi Patel. Prays for and is granted time to file an appropriate application to carry out amendment in the petition list after 2 weeks. 2 weeks. Okay. Serial number 16 with connected matter. Shri Mahesh Prasad Shukla. My lord, reply is awaited. Respondent number 1, 2, and 4. Reply. Yes, sir. 1, 2, and 4. They've already filed a reply. Oh, 1 or 3? 3 is also part of. 3 has already been filed, my lord. Respondent number 3 have filed reply, my lord. 3. They are all of the same organization, NTPC. Why separate replies? And some is a regional executive director, some is secretary, some is executive director, chairman of all are NTPC. Why not a common reply? The main thing is the respondent number 3, trust pension. 3. There's a, yes, respondent number 3. NTPC Pension Trust. So your representation has been rejected? Yes, my lord. Yes, Right. madam. Yes, madam. Representation has been rejected in 16 number. WP number, my lord. तो representation में क्या 529. मांगा क्या था आपने? इसमें मैंने मांगा था कि 1995 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेंशन और अन्य पेंशनरी बेनिफिट, योर लॉर्डशिप। तो इसको इन्होंने 2003 के आधार पर उसमें 1995 में पेंशन था, 97 में पेंशन इन्होंने ट्रस्ट बनाया। पेंशन ट्रस्ट का जो पैरा 8 है लॉर्डशिप, वो क्लियर कट करता है कि इसमें कोई भी एट पेज नंबर पेज नंबर 36 उसमें जवाब सबके आए नहीं है। जवाब नहीं आया। नंबर 3 का भी नहीं आया। नहीं आया। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी भी इन्होंने फाइल की थी मतलब, जो ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी है। Learned counsel for the respondent number 3 has filed its reply. Next para. And who is the contesting respondent? By the both manner, because trust as well as NTPC, both will have to contest it. All contesting party only. Which board? Trust manner, NTPC trust and NTPC manner, both will have to contest it. The Because remaining there are members in the trust, there are members the of remaining NTPC, respondents pray for and are granted how much time? How much time to file reply? 3 weeks. 3 weeks to file reply. But this is a 14 petition. Yes, my lord. अभी तक आपको जवाब नहीं आया। Only in 2, but otherwise in all petitions we have filed a reply. There are different layers for the. तो किस में जवाब नहीं है? इसमें मिलट नहीं है 5295 पब्लिक 14 एंड मिलट
5462/16। हाँ तो ये 2 में करिएगा। तो जवाब क्यों नहीं है आपका? 6 साल 7 साल हो गया जवाब। Sir, we have filed a reply, short reply, in the sense that all these petition is contained to Uttar Pradesh. Our power plant situated in Uttar Pradesh. And all the parties belong to different, not in within the territorial jurisdiction of this honorable court. That short reply I have filed. You are raising objection to maintainability. Yes, my lord, I have filed a reply. You filed, then let us decide that maintainability issue. Yes. बताइए, लाइए। But my lord, they are not supply the copy. A copy I have supplied. Copy I have given. No. In petition number. कॉपी आपने दी नहीं इनको? No, my lord. Copy उन्होंने नहीं दी मुझे। आइए नंबर। In which case? Sir, they read petition number 5295, 2014. हाँ यस, इसमें कहाँ है? I filed it in this. नहीं. This is all Uttar Pradesh. Not here. अब कब पेश किया आपने? Sir, I have filed 1916. Yes. Yeah. Kindly say, have a look at all the parties is from UP, within the jurisdiction of UP. Simply what he made the hears, he says belong to the say he resided in the Singrauli. There's only one petitioner in this case. Gopalji Pandey. Gopalji Pandey. He is resident of Singrauli. Because he was employed in the Singrauli power. He has retired. Retired. But they are not seen a copy. But power Singrauli है ना उसका नाम. हाँ बताइए. Yes. बताइए इसको. Please press your objection. Yes, I have read. Sir, kindly have all the parties from Uttar Pradesh. वो तो सुन लिया, और क्या है? That's only because the territorial jurisdiction. तो cause of action यहाँ rise होता है? No, sir. Because he was employed in respondent number 4. 4 is UP. UP. अच्छा. And he's residing in Singrauli. After that, might be retirement. That does not give his. So what is his cause? Pension. So he's getting less pension. Not less, but sir, he is claiming higher pension. All right, so he's getting less pension than what is due. Than what is due to him. So it's a recurring cause of action. That I'm not saying, but the territorial jurisdiction I have said. तो recurring cause तो कहीं भी आदमी रहेगा तो उसको इफेक्ट करता रहेगा हर महीने जो उसको कम पेंशन मिलेगी. Sir, this is my only know. अब चाहे वो मद्रास चला जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? There is a judgment of our High Court, sir. Merely a residence will not. Merely? Mr. Srivastava, are you serious about this objection? As your lordship said, otherwise you will file a reply. That from the thermal plant which is situated in Uttar Pradesh. But that cause is still affecting him. It's a recurring cause of action. But this is what our. But he's staying in Madhya Pradesh. Yes. So that is affecting him because it's a recurring cause of action. Every month he receives less pension, he gets a new cause of action. But same judgment is there, our High Court single bench. Simply he has recited here that does not give a jurisdiction.
As your lordship, I am not so anxious. I will file the reply if your honor is. No, if you're not anxious, withdraw it. Then why to contest it? No, sir, this is because we have already filed it. None of the respondent is within the jurisdiction of this honorable court. Wait, this was regarding what? What was the cause here in this case? This is a pension matter. No, in this that you are citing. That is with regard to the service matter, sir. This thing. No, service matter is a very wide term. Please, tell us what was the cause of action there. Because he is claiming his compulsory retirement there. ये 28/3/14 जो है ये क्या था ऑर्डर जिसको चैलेंज किया था? कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिखे हैं ना सर. कंपल्सरी रिटायरमेंट. हाँ. So the compulsory retirement gives you a one-time cause of action, not a recurring, like termination or serve. With due respect for the jurisdiction, because all the respondent is from is within the territorial jurisdiction of the Uttar Pradesh. The Shri R. And retired. All right. I was employed and retired from Sonbhadra. District Sonbhadra, state of UP. And therefore, this court does not have jurisdiction to decide the cause raised herein. Next para. The learned counsel has relied upon a single bench decision of this court in the case of so and so, where the order of compulsory retirement passed in a state of West Bengal was challenged at Gwalior bench of this court, and the learned single judge dismissed the writ petition, holding want of territorial jurisdiction. Next one. After having heard Sri R.C. Srivastav, it is seen from the record that the cause raised herein is that the petitioner is receiving less pension than what was due to him. Full stop. Such a cause gives a recurring cause of action to this petition has been filed
after retirement of the petitioner and after settling down in the state of Madhya Pradesh. Where he is still affected by the recurring cause with him. Full stop. The decision of the learned single bench deals with a one-time cause of action and not a recurring cause of action, and therefore is of no assistance to the respondent number 1, 3 and 4. Yes. 1, 3 and 4. Full stop. Next, but accordingly, 1, 2. 1, 2 the and objection regarding want of territorial jurisdiction stands rejected. The reply, the respondent number 1, 2 and 4 are directed to file a paravised reply. I mean, just submit, Manoj. There's a full bench judgment in that regard. Hmm? In the view taken by my lords, Manoj, there's a full bench of our High Court, my lord. Hmm. But although it is not in respect of pension, it is in respect of pay fixation, my lord. Whereby the honorable full bench has been pleased to hold, my lord. That is Yes, the yes. recurring. All right. दूसरे बाकी दो जो है उसमें क्या? Sir, another case, sir, 5, 4. No, you have filed this objection in which Sir, case? two cases. WP number 5462/16. Same matter. Same. You filed it in 16.2 and 16. Yes, 54 petition number 5462/16 And 5462/16. and बस एक ही में पेश किया आपने objection. 16 my lord and 16.2. Only 2 cases. 16 and 16.2 में ये order रहेगा. Yes. और बाकी 16.1 में जवाब आ गया आपका? हाँ, इनका फाइल हो गया my lord. इसमें मुझे 2 weeks का टाइम रिजॉइंडर के लिए. नहीं, सबका जवाब आ गया. हाँ, इसमें सबका आ गया. 16.1 में as prayed for 4 weeks time is granted to the petitioner to file reply. Okay. CL number 17, C. Sanjay Rusia, Rajesh Kumar Tiwari. Yes. Lordship, this is the petition is against the compassionate appointment. Hmm. Our appointment was rejected. It was rejected claim. Yes, sir. On what grounds? The ground was not mentioned. Hmm. It is annexure P9. आपका जवाब है इसमें? जी लॉर्डशिप. अच्छा. What has happened, Lordship, then we came to know that the ground of rejection was that I belong to OBC class, where it was stated that there is no vacant post of OBC, because the matter was sent to collector, in which it was mentioned that post against OBC is not available. So collector returned the proposal and asked that they consider in general category. After that, this rejection order was passed. In the meanwhile, Lordship, state government has also issued direction that OBC class can be considered in the general category. After that, so why did they reject? It has not been mentioned also. Where is the order? At P11, P11, page 35. They are giving you compensation. Monetary compensation. Lordship will kindly come. You are not ready to accept that? Yes, Lordship. Where is the scheme? Scheme is at annexure R1, on which it was decided. But later, this was amended by annexure P7, Lordship. Page 26.
Initially, our case was rejected based on the 7 years parameter. No, But when did the death take place? That took place on 13/2/2002. 32? 13 फरवरी 2002. 13 फरवरी। और आपने अप्लाई कब किया? Applied on 13/7/2009. Why so late? Not maturity हमारी हुई थी 15/4/2008 को, Lordship. And as I was not aware, it was delay of only. You were minor. Minor, yes, Lordship. As per circular, 7 years end on 12 फरवरी 2009. I attained on maturity on 15/4/2008 and applied on 13/7/2009. But later, Lordship, by Annexure P7, state government relaxed this procedure, which is at page 26. Yes. पैरा 2 शासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 13/12/2001 के पश्चात दिवंगत हुए शासकीय सेवकों के परिवार को पात्र रखते हुए ऐसे आवेदकों को जिन्हें 7 वर्ष की अवधि व्यय होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी थी, उनको दिनांक 31/12/2011 तक अनुकंपा नियुक्ति हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। अच्छा, तो आपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया? हाँ, P8 पे है Lordship, 29। P8 page 29। फिर क्या हुआ? As the post of You are the son yes of deceased. Deceased was holding which post? He was holding the post of forest guard when he died. Yes. Right. You are eligible. Yes, I am eligible. Then why was it rejected? This was Annexure P9, page 32. Our proposal was sent to collector. Second para, Lordship, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ये सो एंड सो दिनांक 12/1/2011 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के लिए किया जाता है कि दिनांक 13/12/2001 के पश्चात दिवंगत हुए शासकीय सेवकों के प्रकरण में पुनः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावे। फलस्वरूप श्री शकील खां पिटिशनर वन रक्षक का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पुनः वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित किया गया था। चूंकि आवेदक द्वारा जाति पिछड़ा वर्ग बताई गई है, वर्तमान में विभाग के वन रक्षक के पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कोई पद रिक्त नहीं है। This was returned by the collector by Annexure P10. Then is P10, page 34. Okay. कलेक्टर उक्त थर्ड लाइन Lordship, उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। After that, impugned order P11 was passed, rejecting our case. Right. We made a complaint. So where is the policy? Which policy will apply? Policy, this Lordship, 2011, basic policies of 2008, which is at Annexure R1. The state has filed this. Policy prevailing at which stage will apply? But this policy was relaxed by the state government, and specifically mentioned that which policy was relaxed? 2008, Annexure R1. R1. Page 6. ये 2008 की है. 2008 policy. But this, will it apply to you? Because now the law is that policy prevailing at the time of death will apply. This was prevailing and it was relaxed. No, ये कब की policy है? 2008 की policy. R1. R1 is the policy of 2008. तो death तो 2002 में हुई है. 2002 में हुई थी. This policy was applicable. You say it is 2008 policy. How can it apply to 2002? It will apply prospectively. So what was the policy then? The state has adopted this policy. अपने state ने return file किया हुआ. And our rejection is based on this policy only.
नहीं, वो जजमेंट कहाँ है सुप्रीम कोर्ट में? Which says that the policy at the time of death will apply for policy of compassionate appointment. आपका स्टैंड क्या है स्टेट का? Lordship, in our reply, we have stated that after the completion of 7 years completed on 12/2/2009, petitioner submitted the application after the completion of 7 years. And the time of petitioner was minor and also not having the requisite qualification of appointment on 3 and 4. Then Lordship, नहीं, ये कॉम्पनसेशन क्यों दिया इनको और अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया, उसका कारण क्या है? Lordship, R2 यदि वन विभाग में अनारक्षित वर्ग के पद रिक्त हैं तो अनारक्षित श्रेणी रिक्त पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति ये आपको एल्डर ब्रदर के लिए एप्लीकेशन दी थी शुरू में, उसका क्या हुआ? सेम यही है लॉर्डशिप, एल्डर शकील खान यही है। यही है। अच्छा, Annexure R2 is the letter from Principal Secretary, Principal PCCF. The last para, the Lordship, page 16 of reply. चूंकि वन विभाग में वन रक्षक के संवर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है, इस कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। Then I filed a rejoinder, Lordship, in which I have filed annexure P13 and P15, P16, जिसमें उन्होंने खुद ही लिखा है कि लेख है कि संदर्भित पत्र के अवलोकन करें। अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में अनारक्षित पद पर किसी भी वर्ग के व्यक्ति को वरीयता क्रम से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है, अतः तदनुसार कार्रवाई करें। Lordship, rejoinder page 5 है। कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, वृत्त स्तरीय आंतरिक शिकायत निवारण समिति की बैठक, एनेक्शर P14, in which I was called. So what is the reason that you did not give him appointment but went for compensation? उसका क्या reason है? Here you say that this post, as per roster, it has to be filled up, and OBC category, no post of OBC category. तो कौन सी वैकेंट थी?
अनरिजर्व थी या क्या, कौन सी वैकेंसी? पैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए लॉर्डशिप पॉलिसी का 8.3 रिलाय किया है 2008 की पॉलिसी का। शासकीय अमले के आगामी 5 वर्षों के 30% 8.3 of which policy? Page? 2008 पेज नंबर Page. 10 ऑफ रिप्लाई। 10 of reply. हाँ, पढ़िए। शासकीय अमले में आगामी 5 वर्ष में 30% कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त हो चुके हैं या फिर किए जाने हैं वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। साथ ही आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी, there is no OBC post under line vacant post, lordship. हमें मिला क्या जजमेंट? Judgment is State of MP versus Ashish Avasthi. SLP Civil Appeal number 6903/21. अच्छा। Now, what is the date of the judgment? Date is It must have come in the SEC now. it must have been reported also. It is November 18 November 21. 21? हाँ, तो आ गया होगा, 22 में आ गया होगा। लॉर्डशिप, हमने ये एप्लीकेशन फाइल की है फॉर डायरेक्शन, जिसमें एज लिस्टेड है। But actually, if that judgment is in rem, then it will apply to everybody. That policy at the time of death will prevail. This policy that you are relying is of 2008. Government is relying on that. Action has been taken on this policy only. No, even you are arguing on that policy. You are not saying that this should not apply. You please check that judgment. What does it say? The learned counsel for the petitioner, after arguing for a while, prays for time to seek instructions on the applicability of the ratio laid down by the apex court in the case of so-and-so. To the facts of this petition. तो पार्टीज नेम से निकालो, पार्टीज नेम 22 में आ गया होगा एससीसी में, पूछ लेना बाद में। लिस्ट आफ्टर 3 weeks. चलिए। Cell number 18 C प्रवीण कुमार वर्मा, अनूप नायर। Yes. 17 यही नहीं था? 17 Oh, this is 17 में आ गया। 17 में तो चल। नहीं 16 तक, 17 पे है मुझे। अच्छा वो 17 चल रहा था। कहाँ है उसका नंबर क्या है? 17 was going on right now. Compassionate appointment. In this case, there was no reply from Union of India. 6226. Case number है 8936. 8936 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। नहीं है। फाइनल हियरिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरा नाम शुरू है। इसमें कहाँ है आपका नाम लिस्ट में?
मोहनलाल राजपूत, मोहनलाल राजपूत है ये 18 केस। चलिए ठीक, देखिए। Yes. Team, my lord, I'm taking some time to argue this matter, my lord. My lord, we keep it in March, my lord, I'll argue it out. I need some instructions. I have to clarify certain things, my lord. Readings as such are complete. Hmm. I have to clarify certain things from the respondent, my lord. Hmm. It's after departmental inquiry matter. So I'm saying it will be taken in March. नहीं, it's a case of punishment. Punishment, What punishment? compulsory retirement. अच्छा अच्छा। ये तो एडमिट हो गया होगा पहले, एडमिटेड है। ऑलराइट, द केस रिप्लाई और सब आ गया है। जी जी। ऑलराइट, द केस इज ऑलरेडी एडमिटेड ऑन सो एंड सो। नेक्स्ट para, the pleadings are complete. Next para, the case is ripe for hearing. Accordingly, list the case in the final hearing list of March 23. Much obliged. Chair number 19, Sri Mahesh Prasad Shukla. Item number? हाँ, तो ये 23 तो आते ही है अभी। आने दे, किसी को छोड़ जाएगी। यू आस्क योर वन ऑफ योर जूनियर्स बी टू बी हियर। Kindly see order dated 25/8/2022. हाँ, Honorable court is directed to 25 the respondent 25/8/2022. 2022। Honorable court is directed to the respondent to file a rules. Yes, my lordship, I would like to, there's an adjustment is there in this particular case as well, my lordship. And you want to seek some more time to file the reply. Rule you have not placed on record. क्या नाम आपका? Sana Khan. सना खान। On behalf of? On behalf of? Respondent number 124. 1 to 4. Raise for and is granted further 3 weeks time to comply with order 25/8/22. It was passed 5 months ago. Grants only 2 weeks to comply with order 25/8/22, failing which coercive steps shall be taken against the respondents. After 2 weeks. Chair number 20. Rajesh Rathore. Yes. रिकवरी मैटर है लॉर्डशिप। Hmm. इसमें हमारा इम्प्लीमेंट ऑर्डर है अनेक्जर P3 पेज नंबर 18। Hmm. Yes. ये कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के आदेश क्रमांक स्वयं रीवा दिनांक 18/2/2010 के अनुसार P3 पेज नंबर 18 लड़की। आप रिटायर्ड हैं क्या? रिटायर्ड। P3 क्या रिकवर कर रहे हैं आपसे? ये पैसे की वसूली है 92,000 रुपए की। क्या ज्यादा पैसे मिल गए? ये इनका कहना है कि हमको पहले भर्ती अनेक्जर P2 पेज नंबर 17 देखे लड़की, ये हमको रेगुलाइज किए हैं। और अब ये कहते हैं कि वो धोखे से हो गया था, इसलिए जो है अधिक पेमेंट हो गया, इसलिए रिकवर कर रहे हैं। कितना रिकवरी कर रहे हैं? 92,000 रिकवरी के हो चुकी है। रिकवरी हो चुकी है 70 रुपए का। अभी इनका रिप्लाई अभी आया है, इसमें ये कह रहे हैं कि वो जो है तो इनका जो रिप्लाई है R1 1/10/2022। ये रिकवरी कब करी है इन्होंने? आपके रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद। ये P3 का ऑर्डर है 18/2/2010 और 11 में हम रिटायर हो गए हैं। कब हुई है रिकवरी आपसे? ये 11 के बाद हुई है। कब है? 28/2/2011 से लगातार जो है तो ये रिकवरी करे हैं। और आप रिटायर कब हुए हैं? 11 में रिटायर हुए, 10 में रिकवरी का ऑर्डर किया है। किस पोस्ट पे थे आप? प्यून। अच्छा। ये कहते कौन सा जजमेंट आपके पक्ष का है?
एक ये है हमारे पास जो लॉर्डशिप एफसीसी है 2012 बैलूमेट पेज 417 चंदी प्रसाद 1998 में हमको रिप्लाईज किए हैं और 2010 में कह रहे हैं कि वो गलती से जो है तो आपको रिप्लाईज किया गया था, जब वो प्रमोशन दिया गया था, जबकि आपको रिप्लाईज किया गया था। आपको कोई स्टे नहीं मिला है, पहले ही रिकवर हो गया। हाँ, पहले रिकवर हो गया था। क्या कहना है आपका? Kindly see para 7 of my reply and R1. Paragraph 7. Yes. The instructions we have received from the commissioner. Hmm. It says that a partial amendment has been made in order dated 2/8/2000, whereas where the word promotion is replaced with the regular establishment. Kindly see annexure R1, your lordship. पैरा थर्ड, कार्यभारित आकस्मिक निधि भृत्यों के नियमित किए जाने के संबंध में शासन की कोई नीति निर्देश नहीं है, किंतु इसके बावजूद आपके द्वारा नियमित किया जाकर पदोन्नति दे दी गई, जबकि शासन के नियमों में आकस्मिक निधि भृत्य के भृत्य पद पर पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। भविष्य में न्यायालयीन प्रकरण निर्मित न हो, अतः संचालनालय द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर पूर्व में जारी कार्यलीन आदेश दिनांक स्वयं के आंशिक संशोधन करते हुए पदोन्नति के स्थान पर नियमित पदस्थापना पढ़ा जाए, तदनुसार वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। तो ये जब गलती से आपने इनको वेतन दिया जो नहीं देना था, उस वक्त कोई अंडरटेकिंग ली? तो क्लास 4 एम्प्लॉय से क्या रिकवर करेंगे आप, कैसे करेंगे? कौन सा जजमेंट है बताइए? ये तो इसमें लिखा है कि we order that the excess payment may be recovered from appellant's salary in 12 equal installments. ये आपने दिया, इन्होंने दिया है? आपने दिया तो आपके खिलाफ है ये? वेरीफाई कर ली दूसरा, हाँ? फाइल में रखा था तो इस हिसाब से मैंने। नहीं तो उसको पढ़ तो लीजिए कि आपके पक्ष में है या खिलाफ है। उसमें तो कहा है रिकवरी कर सकते हैं बट इजी इंस्टॉलमेंट्स। ये क्लास 4 एम्प्लॉय से कैसे रिकवर करेंगे भाई? अंडरटेकिंग है ना आपने कोई अंडरटेकिंग ली ना कुछ ली। देखिए इसमें दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड सेलिंग द recovery sought to be made from the petitioner to the tune of rupees 569 569 Yes, sir. by order By order 18/10 Sir, P3. P3 यानी कि 2810. पेज नंबर 18 में।
उसमें ऑर्डर की डेट कहाँ है? ये आदेश के नीचे कार्यालय संचालक संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन के आदेश क्रमांक कितना रीवा दिनांक 18/2/2010 के अनुसार यही डाला है बस। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये आदेश लिखा है लड़सिप पेज नंबर 18 में। आराम में। हाँ। आदेश है मिडिल में है उसके नीचे कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक रीवा दिनांक 18/2/2010 के अनुसार श्री राजा भैया कुशवाहा भरत 18 में तो एक टेबल है, ये टेबल सी बनी है। आदेश जो है 18/2/2010 का उसके लाइट में फिर इन्होंने ये रिकवरी बनाया है टेबल, ये सर्विस रिकॉर्ड में इन्होंने ये जो आप पढ़ रहे हैं ये 18 पेज में पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 18 में। हाँ कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये तो टेबल बनी है, उसमें वो डेट्स पड़ी हैं और फिगर्स पड़े हैं। हाँ उसके ऊपर है लड़सिप आदेश लिखा है मिडिल में। वेतन जो पाना चाहिए, वेतन जो प्राप्त हो चुका है। हाँ। उसके ऊपर आदेश जहाँ बीच में लिखा है आदेश आदेश कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक इतना वेतन निर्धारण 2007/253 रीवा दिनांक 18/2/2010 के अनुसार। यहाँ कुछ नहीं है। ये इसके पहले है लड़सिप जो वेतन जो पाना चाहिए उसके पहले है कनेक्ट में 17 पे मेरे इसमें तो 18 डला है ये 2/8/10। हाँ P3 is 2/8/10। 2/8/10 हाँ उसी के नीचे ये जो आदेश है यस लड़सिप। हाँ तो आप 18 क्यों बता रहे हैं? इसमें पेजिंग हमारे में 18 है लड़सिप। आदेश डेटेड 2/8/20। हाँ इसी के नीचे जो आदेश इसी के बगल में जो आदेश है वो कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा मध्य प्रदेश के issued by the principal of government higher secondary school कारीगोही हाँ कारीगोही कारीगोही जिला सतना, which in turn is based on the order of the joint director treasury and accounts dated 18/2/10। यस यस P3 next para. It is undisputed that the petitioner from a class 4 post attained the age of superannuation on यस लड़सिप रिटायर कुछ असिस्ट कुछ कोर्ट को असिस्ट तो करिए। यस लड़सिप ये 7/1/7/11 डेट ऑफ सुपरएनुएशन क्या है आपकी? नहीं आप लोग इस वक्त जब केस आर्ग्यू हो रहा है तो आप लोग ये पन्ना क्यों पलटते हैं? आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं? ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको बताने चाहिए ना। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ रिकवरी क्या है, उसका डेट क्या है आपका। सेवा इसी में लिखा है लड़सिप अनेक्जर P3 में पेज नंबर इसमें 28/2/2011 सेवानिवृत्ति तिथि 28/2/2011। तो ये कहाँ नोटेड होनी चाहिए? ये इसी में जहाँ पढ़ रहे थे लड़सिप नहीं ये नोटेड होनी कहाँ चाहिए आपके पास जब आप बहस करते हैं? बताइए कहाँ नोटेड होनी चाहिए? अलग से अलग से एक स्लिप में? यस सर। फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कम से कम पड़नी चाहिए। 28/10 28/2/2011।
Next para. The learned counsel for the petitioner informs at this stage that the aforesaid recovery has already been made. Next para. The reply submitted by the state reveals that due to inadvertent mistake, the excess payment was given to the petitioner at the time of pay revision. No, at the time of Yes, ये regularized किया है. Regularized. Paragraph 3 में भी seen of my return. When his services got regularized in 13/1/1998. by mistakenly treating him to be regularized from an earlier date instead of a subsequent date. यही है ना? जी sir. All right. Full stop. The reply is also silent as to whether any undertaking was written undertaking was taken from the petitioner at the time when the excess or undue payment was being paid. May I submit, my lords? Hmm. Lords, may kindly see para 7 of this return. Uh, Para 7 specifically says, my lord, that later on, my lord, what the respondent authorities has done, that they have made a partial amendment in this order dated 2/8/2000, whereby it has been held that the word promotion should be replaced with the regular establishment, accordingly directed to pay the fixation, while it's order dated 1/10/22. My lord, in light of this submission, my lords, and in continuation to that, I would like to submit that the case of Chandi Prasad, my lords, and Unyal and other laws, my lords, which are already been settled, my lord, in case if there is some excess payment done to the authority, my lord, that can be recovered. So this period, my lord, may find at para 4 of my return. 17/1/1998 to 1/7/2010 is the period where the excess amount has been paid, and that has been recovered, my lords. That's almost 12 years. 12 years. Little less than 12 years. 11 years. 11 and a half years. Gee. So you treated him to be regular from 98 instead of 10. Yes. Because he was not regularized, वो जो पहले mistake हो गया, वो ही continue हो गया, and that is why this excess payment has been. So but how do you recover it? In view of Rafiq Masih. But Rafiq Masih, Chandi Prasad also, my lord, says that in case if there is some excess payment which has been made in terms of his salary, that can be recovered, for which he was not entitled for. Where is that was not his legal right. No, where is that? Well, No, even the subsequent decision which has come. Rafiq Masih is already, my lord, clarifying before the Rafiq full bench, Masih. is before the full bench, my lord, wherein this Jagdev Singh's give us liberty to recover the amount, my lords. So far as this Jagdev Singh case is concerned, that gives the liberty to the state to recover any amount which has been paid in terms of salary. Only in respect of clause 2 of that Rafiq Masih. The But that is clarification was only in respect of clause 2. But that is before the full bench, my lord. So the final outcome of that has to become. No, we can't hold our hands. No, Lord, I am not saying that, Lord. I'm just So the answering law the which questions is- of your lordships. Law which prevails will apply. Lord, most humbly, my submission is, my lord, that I am just answering the query, my lord, in terms of that why we have recovered this amount, my lord, because that was not his legal right Oh, that's to right. make that payment. He was wrongly given some money. But there was no misrepresentation on his part also. Pardon, my lord? There was no misrepresentation. There was, my lord, certainly, my lord, there was an undue advertence on the part of the state authority wrongly treating him to be regularized. That is what my submission is, and that is what we have fairly admitted in our return, my lords. Yes. We are not taking any twisting stand, my lord, that he has submitted something. It is a straightforward thing, my lord, that we have committed some error and that is recovered. इसमें क्या लिखा है? Excess oblique undue payment was made. Full stop. Next para.
The learned counsel for the state has strenuously argued that the excess payment made was not due to the petitioner and therefore has been rightly recovered by the state, by the employer. Full stop. Next para. True it is that the payment may not be due to the petitioner, but considering the fact that the petitioner is a class 4 employee and no written undertaking was taken from him, noticing him of the fact that any such recovery would be made in the future, and in view of the law laid down by the apex court in the case of Rafiq Masih, the impugned action of recovery cannot be sustained. Next paragraph. Accordingly, the petition is allowed in the following terms. Number 1, the impugned recovery of rupees so and so is set aside. Number 2, the state is directed to refund the amount of the said recovery, or this refund the excess payment within 2 months, failing which the same will carry interest at the rate of 10% per annum. Number 3, the state is at liberty to recover the amount from the erring personnel / officers. Cell number 21, Sri Pratap Tarun Singh. Yes. This is an admitted petition. This is an admitted petition, my lord. The impugned orders passed by respondent number 2, whereby the punishment of compulsory retirement has been inflicted on the petitioner. All right. Petition is already admitted. None for the petitioner. Also for state. Petition is already admitted. List for final hearing in the month of April 23. Cell number 22, Sri Satyendra Prasad Dubey. Yes. Application. And the first one application is for amendment in order 12/10/2017, and that has been allowed on last order. Same could not be incorporated due to some difficulty. And and thereafter I have moved an application under Order 6 Rule 18 for extended time to incorporate the amendment. All right. I guess also 898 of 2023 application so and so seeks extension of time to incorporate the amendment which was allowed on 12/10/2022. 12/10/22. Yes. Next. After due consideration and for reasons mentioned therein, IA stands allowed. Let the amendment be incorporated within 10 days. बाकी IAs क्या हैं? Another IA Documents to be taken on record. IA so and so 1062 stands disposed of with the observation that documents annexed therein shall be considered at the time of hearing. Appropriate directions क्या है? Appropriate directions to respondents, another IA. My lord, that is for this petition is admitted for final hearing. Huh. That is application for to be taken final hearing at motion stage. It is already admitted. It's already admitted. Yes, my lord. All right. IA 11521 of 17 is taken up, considered and disposed of with the direction that since the petition has already been admitted on 8/3/17, list in the final hearing list of April. But they may be directed to file rejoinder if any they want to file.
My lord, there is no necessity of the. That may be recorded. All right. That may be recorded. तो पहले कर दो. The counsel for petitioner There is submits no that claim, my lord. Yes, my lord, that may be recorded. that the petitioner does not wish to file rejoinder. My lord. Final hearing 18 April. My lord, this is the compassionate, claim for compassionate payment. Therefore, I am paying next week may kindly be taken, my lord. So April 23 it will be in the final hearing list. आप request कर लीजिएगा जब भी आए. Kindly be taken, there is. नहीं मार्च में केस लगा दिए हैं ना इसलिए अप्रैल में आ रहा हूँ. Chair number 23, Sri Praveen Kumar Verma, Rahul Kumar Jain. अमेंडमेंट का मैं जवाब आ गया. There is one application change of counsel. Then there is one application for amendment. एक for grant of salary. interim relief की भी है. उसके बाद हमको काम नहीं ले रहे हैं स्टॉप में, तो उसके लिए कंटेम्प्ट अलग से पेश किया हुआ है. नहीं कोई interim order है. Yes. कौन सा? ऑर्डर डेटेड 27/3/2015. 27/3/2015. 27/3/15. Yes. नॉन कंप्लायंस में कंटेम्प्ट नंबर है 1096/17. कंटेम्प्ट के साथ लिंक कर कंटेम्प्ट 1096/17. My amendment application by law and this case will link with contempt. ये तो बड़ा पुराना ऑर्डर है. उसके 17 से कंटेम्प्ट पेंडिंग. They are not complying this. The contempt number is. नहीं तो कंटेम्प्ट की क्या जरूरत है, इसी में आइए लगाइए, इसी में फर्दर डायरेक्शन करेंगे. अलग से केस रजिस्टर होगा फिर नोटिस जाएगा. वाई इसी में आइए लगा के डायरेक्शन लीजिए. इसमें हमने कंटेम्प्ट ऑलरेडी लगा चुकी है, आप कह रहे हैं तो इसमें भी लगा दें. नहीं मैं आपको कोई सलाह थोड़ा दे सकता हूँ. आप अपने मर्जी के मालिक हैं भाई, आप जो चाहें कर सकते हैं. बट लगा देते सर, आइए लगा. दैट्स अ मच शॉर्टर मेथड. अप्लाई फाइल है से एडमिटेड है क्या?
तो आइए जो आपने पेश करा एक तो अमेंडमेंट का करा है, अमेंडमेंट में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? Huh? The IA was filed on 2nd of January 23. अब ये इस तरह डिसाइड नहीं होगी वर्मा जी, फिर अमेंडमेंट होता रहेगा तो ये अमेंडमेंट जरूरी है क्या? अच्छा, the amendment IS also for amendment is considered and allowed for reasons mentioned therein. Let amendment be incorporated within 10 days, 10 working days. State, next para, state is free to file additional reply if it is so advised. List along with? उसमें इसमें सेपरेट अलग से लगा हाँ? आइए लगा अच्छा। कंटेम्प्ट नंबर है 1096/17 1096/17 after 2 weeks. Chair number 24, Sri R. Singh, Anup Nair. Please, Manu. Yes. What pertains to pensioning. The petitioner was initially appointed as a clerk, my lord, on dated 11/12/1961, my lord. क्या? What is the issue? Your grievance क्या है? My lord, the respondent authorities, my lord, they have retained the amount of pension, my lord, of the petitioner, my lord, from 1/8/2001 to 10/11/2009, my lord. Which he is legally entitled for pension, my lord. You are not getting pension? My lord. Nothing or some? You are getting less pension? My lord, the respondent had retained the amount of pension, my lord, from 1/8/2001 to 10/11/2009. As my lord, No, you were paid, but you were paid late. Actually, my lord, When did you retire? My lord, the petitioner was retired on 31/7/2001, my lord. 2001. My lord. Then when did you receive your pension? But the issue involved in this, my lord, the petitioner has submitted a representation to the respondent authorities, my lord. But they have, same has not been entertained, and the petitioner has filed a writ petition, my lord. And in the light of decision of the Apex Court reported in 2009 AIR SCW, Allahabad Bank versus All India Allahabad Bank Retired Employees Association, my lord, the writ petition has been disposed of. Now, my lord, in pursuance to the option, my lord, to join pension scheme, my lord, under Allahabad Bank Employees Pension Regulation 1995, in terms of settlement dated 27/4/2010, my lord, signed between Allahabad Bank of India and unions, submitted by the petitioner, the bank permitted and released the pension under the aforesaid scheme, commonly known as New Pension Scheme, with effect from 27/11/2009, my lord. Now, my lord, thereafter, my lord, after the petition same has been disposed of, my lord, then again the petitioner has presented representation before the respondent authorities, my lord. But same has not been considered, my lord. Therefore, the petitioner has filed a contempt petition, my lord. Thereafter, my lord, I have prepared a synopsis, my lord. If my lord, kindly see the synopsis. It could take some time, my lord. It may not be possible today. Well, it's already 4:30. ठीक, कब तक ऐसे निकलेगा? नोटिस में कब आएगा? This can be decided. It will take some time, my lord. I have to also address on merits, but because it's contested matter, my lord, it will take some time. No, he has been given less pension. No, my lord, the date he is challenging from which he has been given pension. Date. There is a judgment of Apex Court So also. let it, we'll mark it not reached. And what about remaining? Baki sabka?
ठीक। 70? 74. 24. Like, Lordship, I may permit to this petition, withdraw this petition, Lordship. Because that has been wrongly challenged before this Honorable Court. In spite of that, Lordship, the 482 petition would be preferred, Lordship, would require. The matter is regarding 311 of the CRPC application was dismissed by trial court for recalling of the evidence. Therefore, this miscellaneous petition was referred. Instead of that, Lordship, we wish to file a 482 petition before this Honorable Court, Lordship. 482? Yes, sir. CRPC. Right. Certified copy also may kindly be written back. All right. You are counsel here? Yes, sir. क्या नाम है आपका? Saurabh Sharma. Saurabh Sharma. Shri Saurabh Sharma at the very outset prays for withdrawal of this petition, with liberty to avail the remedy available to him under the CRPC. With the aforesaid liberty, petition stands dismissed. Certified copy may kindly be written. The certified copy we returned after retaining the true copy of the same. All right.
All right.